अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Elahi, Yazdan, Ahura and God the Beloved. You are named Izad, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. Welcome everyone today for our lovely satsang to share and celebrate the life of our dearest Bhauji, Bhau Kalchuri, whose birth anniversary was on 13th of January.
So we will begin with any songs, any stories, any share that you would like to dedicate to Bhauji today. You may raise your hands digitally, whoever would like to, and then you can unmute. There is a reaction button down there, so you can raise your hand digitally through that, or you can put on your camera and raise your hand if you don't know where the button is. Who would like to begin? Okay, so let me begin. Till then, everybody can decide what they want to share. So this is Ghazal 88 from the book Meher Roshni. It is titled, We Will Sing Meher's Name and Awaken. I've just tried to put a tune to it. Jai Baba. To lose ourselves in Meher is to find him. The departure of the false self is his arrival. To empty the heart is to establish his dwelling. And to keep awake in sleep is to find his abode. We carry a lamp to find him in the darkness of our ignorance. We will sing, we will sing, we will sing, Meher, Meher, Meher. The world is a dream into a dream. Nothing belongs to us in this world. Do not dream, do not be attracted to the world's allurements. If you long to awaken, you should not follow the ways of the world. We will awaken, we will find Meher in everything by following his ways. We will sing, we will sing, we will sing, Meher, Meher, Meher. Those who are ruined at every step are flourishing at his feet. They smell the wine and drink it. In becoming broken, they become strong. O Bhau, we will sit here forever and we will reach Meher. We will sing, we will sing, we will sing. Meher, Meher, Meher. Avatar Meher Baba ki jai. Yes, Shanaz auntie. Please unmute and put on your video if you can. Would love to see you. Shanaz auntie, do you want to sing or share something, a story from your childhood? I don't know if she's around. So who else would like to? Geetaji, would you like to share a bhajan or something? Anushka? No, I don't know anything to share. Yes, Meher, you can share. Jai Baba, just wait a little. Sadness has something of silence in it. Whenever you are sad, you are a little silent. So there's an association between your sadness and silence. When you become silent for the first time, the only thing you can feel from your past experience is sadness. Allow it to depend. Don't judge as sadness. Just accept it as a bridge between silent and song. Just a little waiting is necessary. And then slowly but surely the sadness will start turning into a song with no words. It shall turn into a music with no sounds, into a dance with no movements. Jai Baba. Jai Baba. Thank you, Meher. Welcome. Okay. So anyone else would like to sing?
Okay, so till then I will read from the book The Everything and the Nothing. It's page 78, chapter passage 47. The question and its answer. There is only one question, and once you know the answer to that question, there are no more to ask. That one question is the original question, and to that original question, there is only one final answer. But between that question and its answer, there are innumerable false answers. Out of the depths of unbroken infinity arose the question, who am I? And to that question, there is only one answer, I am God. God is infinite, and his shadow too is infinite. Reality is infinite in its oneness. Illusion is infinite in its manyness. The one question arising from the oneness of the infinite wanders through an infinite maze of answers, which are distorted echoes of itself, resounding from the hollow forms of infinite nothingness. There is only one original question and one original answer to it. Between the original question and the original answer, there are innumerable false answers. These false answers, such as I am stone, I am bird, I am animal, I am man, I am woman, I am great, I am small, are in turn received, tested, and discarded until the question arrives at the right and final answer, I am God. Avatar Meher Baba ki jai. I've got another one to read. Should I read, Roshni? Sure, sure. Okay. Jai Baba, existence. The one and eternal existence is always there throughout the countless varied aspects of life. Existence is a pervading and is undying essence of all things, whether animate or inanimate, real or unreal, varied in species of uniform forms, collective or individual, abstract or substantial. In the eternity and existence, there is no time, there is nothing has happened, and nothing will ever happen. Everything is happening in the unending now. Existence is substance, whereas life is a shadow. Existence is eternal, whereas life is perishable. Existence is God, where life is illusion. Existence is reality, where life is imagination. Existence is everlasting, whereas life is passing. Existence is unchangeable, where life is everything. Existence is freedom, where life is binding. Existence is invisible, whereas life is multiple. Existence is imprescible, where life is depression. Existence is independent, whereas life is dependent on mind, energy, and gross forms. Existence is whereas life appears to be. Existence, therefore, not life. Mer Baba, Jai Baba. I read from What is God? Just got it from. Thank you. Thanks, Meher. Okay, so let me share screen, and there are these beautiful pictures on one of the sites of the Meher Baba Life and Travels, and there are some lovely pictures of Bhauji. Till we have another hand up, I'll just share the screen.
and then read something about Bhauji. So this is dear Bhau Kalchuri. Born on 13th January 1927, and he moved on to beloved Baba on 23rd October 2013. He was buried in Lower Meherabad, where the other main mandli is. Sheilaji and Mehernathji are his two children. Mehernath and Raj Kalchuri will join us by 7:45. This is young Bhauji with Baba in Mehrazad, 1967. This is Bhauji with Ramaji, Sheila and Mehernathji. Mehrazad, 1968. This is Baba with Bhauji and Eraj. Here Bhauji is standing at far right over here. How sweet. This seems to be the license or something of Bhauji. Baba has gifted us innumerable books through Bhauji. This is Bhauji with John Connor. This is at his visit to Myrtle Beach. This is Bhauji with Anthony Zoes. And some wonderful, joyful pictures of Bhauji with the guitar. This is Mehernathji, Ramaji with Bhauji, with Rajji and their two sons, Zubin and Jatin. Bhauji had joined very young. His name was Veer Singh Kalchuri and was nicknamed Bhau, which means brother in Hindi. And Bhauji joined Baba in 1953 after receiving the master's degrees in law, chemistry, and agriculture. For many years, he served as one of Baba's night watchmen, and it was during the hours of night watch that Baba first expressed his wish that Bhau begin writing poem songs in Hindi and later books and plays for Baba's pleasure. After Baba dropped his body, Bhauji's unique background in law and public administration proved to be invaluable from the early days of the trust's activities when Bhau became the trustee through the past 17 years when he served as chairman. Whether working day and night to solve a trust difficulty, answering a pilgrim's question, resolving a resident's dilemma, or touring the Baba world in response to invitations from Baba centers in India and abroad, Bhauji gave extraordinary service to Baba through many different aspects. Even during his last illnesses, despite great discomfort, Bhauji made efforts to give visitors his personal attention, loving wisdom,
and lively sessions of witty humor and song, as well as continuing his Sunday online chat, which was looked forward to and enjoyed by Baba lovers around the world. Bhauji's achievements for Baba's cause were legend. But like the men Mandli who went before him, Bhauji will be remembered and honored by posterity. Above all, because of his loving, wholehearted, lifelong surrender at the feet of the avatar of the age, beloved Meher Baba. Avatar Meher Baba ki jai. And it was on one such online chat day just before Dhuni on 11th of March 2012 when Bhauji gifted me this Baba's lifelong gift as the name Roshni, and it will be etched as one of the most significant days of my life. And I was fortunate. Bhauji is the only Mandli member who I met out of everyone else. And I spent about three birthdays with him before he merged into Baba. And I'm grateful to Baba for the opportunity that came through to be inspired by Bhauji, to just grasp from him everything that the Mandli possibly went through, and we can't even imagine the kind of life. If we read Lord Meher, then we will know the kind of life that the Mandli led only could be possible with the Avatar's grace. In human capacity, it would be impossible to stand through with everything that they went about in living a life of complete obedience, surrender, and love for beloved Baba. There is this one of my favorite lines where Erach says that everybody asks him, "What did you gain by living with Baba?" And in the song Mani says that's Baba says that's the wrong question. Everybody should ask you, what did you lose being with Baba? Words to effect. And that is the kind of life that Bhauji and all the Mandli had with beloved Baba. So do we have anyone else who would like to share something? You could read any Baba's quote. Come on, participate a little bit. You all have been long enough with Baba. You must be having some Baba book or on the net or something. Read a Baba's quote, engage yourself with Baba's words, or if you have a story, then share a story. Katie Auntie, would you like to share something? Any quote, anything, any book around you of Baba that you'd like to pick up and read something. Vandana, Yeah, hi, Jay Baba. just could you lower the computer flap of your phone because Sure, can't sure. see you. Yeah, sure. It's actually my phone, so I'll just Yeah, hold it in my okay. hand. Jay Yes. Baba. Jai Baba. Just want to share a very recent experience with Baba. So I'm having many experiences like that. Whenever I'm cribbing, Baba shows me that he's around. Many experiences like that. So it was Guru Nanak Dev Ji's birthday, and we had gone to the Gurdwara, to pay our respects. And there was a lot of traffic, so we were being let out in batches, and there was a kirtan which was going on, which spoke about Nanak Aya. So the verse kept on saying Nanak Aya, Nanak Aya. And the whole decor of the Gurdwara Sahib was baby pink and white. And we all know that baby pink is Baba's favorite color. So when I saw baby pink and white flowers, I said, oh, wow, Baba, thank you. Thank you for being around always. And then when I reached the Granth Sahib Ji, the whole Granth Sahib Ji's coverage also was baby pink. So I said, oh, wow, Baba, thank you for full darshan. Thank you so much. And as soon as I bowed down at the Granth Sahib Ji, the Shabad which changed to was Baba Nanak Aya, Baba Nanak Aya. So I was like, oh my God, this is just too much. I was just cribbing to him since morning. So then he told me, don't crib so much. I'm there with you everywhere.
So I was just delighted. So yeah, I just want to share that, whenever we are feeling that we are alone, actually in more ways than we know, he's always present with us. So yeah, that's my little story which I wanted to share. So lovely, Vandana. Thank you so much. Yes, and it is like inevitable that Baba, in the smallest of the things, he will try to bring us that reassurance of his presence and love being there with us. And I think, especially in these 2 years with the seeming COVID being there, I think there have been so many people who have got these, small, big, little assurances from Baba in so many sweet ways that are completely uncanny. So it is like needle in a haystack for that experience to otherwise happen, and he just brings it about to you as if like, putting food on a platter right into your face, and offering it to us. And that's when I keep remembering, Baba's line of that Baba loves us more than we can ever love ourselves. And that is so true. And how magnanimous that God has to keep proving his love to us rather than the other way around, you know. So I think, but that's what, when we say aajkal ke bacche, I think Baba will be saying the same thing for us. Where the parents have to constantly, prove their love for the children. I think we are falling into that category of, Baba, are you there? Please show us. Baba, do you love me? So yeah, yeah. Anybody else would like to share something? Rita auntie, today you must read. You cannot get away like this. Rita auntie, are you there? Yeah, Yes. yeah, So our yeah. poetess Rita Baba auntie is dis going to read something. uh, the Baba distributed sweets yesterday. It was a special day. लो बच्चों ये मिठाई बहुत है ये सुखदाई मिश्री की मिठास खटास को देती बनवास मीठी सोच मीठा बोल मिश्री का ये है घोल प्यार फैलाओ गले लगाओ दुनिया को करीब से ले आओ बाबा की बात दिल को से मानना बस मीठे ही मीठे मोती बिखरेना जय बाबा ओके जय बाबा Jai Baba Rita auntie. Thank you. it was a Read day more. Baba Read gives one sweets to more. everybody. Read one more from your I beautiful collection. I will find out. I will take the hand and Okay. find out. Okay. Find out and read one more. Okay, okay. Okay. Shanaz auntie, tell us some ये story मेरे from अंदर your पड़ा हुआ childhood. है ब्राउन में वो जो Meher, you want to say something? Sing a song. Yeah, sure. Sing a song. Mer Baba, you alone exist. Shall I sing that? Yeah. O priceless treasure of knowledge, you are within and without, and you are the ocean of mercy.
You are in all worlds. You are the ocean of attributes. O Mer, God incarnate, you alone exist. You are Yazdan, you are Ezad, you are Allah and Ishwar. You are Ram, you are Buddha, you are beloved Lord Krishna. Who with you finger lifted the mountain? You alone exist. You are beyond God and beyond God also. The ocean of kindness, you alone exist. You are Muhammad, your perfection personified, your knowledge itself, and you alone exist. You in everyone, and you are in everyone. O beloved, you are the enlightened one, and you alone exist. You are with attributes and without attributes. You are the sole player in divine game. You alone exist. You are matchless, the one and you are reside in every heart, and you alone exist. You're eternally motionless and immovable is your abode. You are the highest, for you alone exist. You are the doer and deed with the cause of doing. The sustain you are, and master of masters, you alone exist. You are the seeker of the worship and the sadhana. O my God incarnate, you alone exist. You in front and behind, you are above and below. O Lord, you live in every house and you alone exist. You are beyond and beyond, yet remain within everyone. You are pervading and you alone exist. You are in each neighborhood. You are the sustainer. You are self, are all worlds, and you alone exist everywhere, whether above or below. You are completely, you alone exist. You are unseen yet seen also. You have in everyone, forgiving each his sins. You alone exist. There is no one with you. You are manifesting and unmanifest as you alone exist. You are man, you are birds, you are fish and animals, for you alone exist. You are the bugs and giants. I don't know how to say it. I'll spell it Gnats. You are snakes and scorpions. Meher, Yeah. yeah, sorry. You're reading the full thing because we're going to play the video at the end. No, I then think you're after going to say an excerpt. Okay. you finish this thing, because I'll also have to change onto that. No. I'll have to change. Okay. So I'm playing a little video where Bhauji is talking. Yeah, and I'll go on the other one now also. Okay. Some, As you अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।
O priceless treasure of knowledge, you are within and without, and you are the ocean of mercy. You are in all the worlds. You are the ocean of attributes. O Meher, God incarnate, you alone exist. You are Yezdan, you are Rizad, you are Allah and Ishwar. You are Ram and you are Buddha. You are beloved Lord Krishna, who with one finger lifted the mountain. You alone exist. You are the beyond God, and the beyond God also. O ocean of kindness, you alone exist. You are Mohammed, you are perfection personified. You are knowledge itself, and you alone exist. You live in everyone, and you are everyone. Oh beloved, you are the enlightened one, and you alone exist. You are with attributes and without attributes. You are the sole player in the divine game. You alone exist. You are matchless, the only one. You reside in every heart, and you alone exist. You are eternally motionless, and immovable is your abode. You are the highest, you alone exist. You are the doer, the deed, and the cause of doing. The sustainer you are, and the master of masters, you alone exist. You are the seeker, the worship, and the sadhana. Oh, Meher, God incarnate, you alone exist. You are in front and behind. You are above and below. Oh Lord, you live in every house, and you alone exist. You are beyond, yet you remain within everyone. You are all pervading, and you alone exist. In each neighborhood, you are the sustainer. You yourself are all worlds, and you alone exist. Everywhere, whether above or below, you are complete. You alone exist. You are unseen, yet seen also. You live in everyone, forgiving each his sins. You alone exist. There's no one without you. You
You are manifest and unmanifest as you alone exist. You are man, you are birds, you are fish and animals, for you alone exist. You are bugs and gnats, you are snakes and scorpions, you are ants and mosquitoes, you alone exist. You are insects, you are lice, you are dogs, asses and pigs, you alone exist. You are deer and elephants, you are cats and monkeys, you alone exist. You are the moon and the stars, the dawn and the night, and the sun and also the light, you alone exist. I kept it 2 years ago. I kept it and I did not compose. So that line I remembered and I composed 6 couplets. And then Baba was in mood. So he would do like this. He was playing your tabla, drum. And he would just compose 1 couplet and I would write, and then another couplet, 28 means 22 couplets in no time he composed. And what was there? I am elephant, I am horse, I am donkey, I am mosquito, I am bugs. So all these 28 couplets. And then we went to Pune. We went to Pune and then I was still working on that book because Baba had also asked to versify the discourses. So I was working on that. I would remain in upstairs and people would come, and he had asked his own nephew to sing. So he was singing. And what he was singing? I am elephant, I am donkey, I am mosquito. So then I am bugs. And I did not know what was going on there because I was busy with that work. So at 3 o'clock, I would get down and go to Baba's room for watch. And here Balnatu and one person was there. What's the matter? Why do you laugh? So Balnatu says, this is the prayer? This is the prayer? I am elephant, I am the dog, I am the cat. This is the prayer? I did not say a word. And I went to Baba. And I said, Baba, should I change a little bit this prayer? Baba says, this is the only prayer which gives all-pervading nature of God. God is in everyone and everything. This is the only prayer which gives all-pervading nature of God. Don't change anything. Don't change anything.
So when God is in everything, I'm not in the rascals. I'm in them also. I'm also in ant. Baba dropped his body and I would be in my room. Nobody would know that I was there alive. No, nobody, because I would be very busy and I would not want to see anyone. Give something to me to read. I said, what to do now, what to give? So I gave that prayer. I had already translated it into English. So I gave that prayer and I said that this is composed by Baba himself. I have not composed. I composed only 6 couplets. Who was there? Who was laughing? So at dinner time, when I came out, so he said, that prayer? Of course, I felt touched. I said, it is very person. He was laughing at me. Now he feels touched with the prayer. Because he came to know that Baba composed. Devi Nadin had come for the savas and to sing. So she was singing, the whole atmosphere was changed. It was quite different. I'd never heard. I never heard because I cannot sing, so I never tried and I never gave to anyone. But now they have started this. And it was really, when you hear, then you just see God is in everyone, all pervading nature of God. Prayers are there. You are so high and this, you are, no one is equal to you, this, we just hear all this. But I am an ant, I am in bugs. No. So this prayer, of course, he had given to me. Now I realize the importance of that. Baba said, don't change even a word of it. Keep it as such. And he himself put my name there. I am not composed. It is not composed by 22 couplets. Baba himself composed. So Baba heard those 11 stanzas which Bhauji had written in Hindi. I'm talking about only Hindi, right? And Baba liked it very much. And he was in a very good mood. So he said, sit, I'm going to give you some more. And then he gave 17 stanzas more to Bhauji. And Bhauji said he was in such a good mood, so Bhauji would write it. And that became a so-called prayer poem of Bhauji. Although Bhauji says it is so much of Baba's, but Baba never said that I had given it. So one fine day in Guru Prasad, Bhauji also did not know that Sheru was Baba's nephew. You know Sheru, Baba's nephew, Rustam Sorab's elder brother. So Baba would call Sheru when Baba was in Pune, Guru Prasad, to narrate this entire poem on an everyday basis, which he did not know. And there were people sitting around, And of course, in that, Dr. C.D. Deshmukh was there and Balnatu was there. So when they heard all these things, then one fine day, Bhauji came over there and they laughed at him. So what sort of prayer you have written? You are a mosquito, you are a bug, you are a gnat, you are a pig, and all this. Is this the way? And of course, Bhauji never said that it was Baba's composition. So at night time, Bhauji told Baba that this is how they are laughing at all these things. And then Baba said that you are not going to change a single word. And this is going to be a very precious prayer, a very popular prayer in future for posterity, in times to come, for people to realize
that God is not just in the good and the beautiful things, but He is also in all these things which we shun, which we think is very ugly and dirty and all that. But God is in all these things also. So that is a very small narrative. हर भीतर ज्ञान के आगर करुणा सागर तुम ही तो हो। सकल चराचर गुण के सागर मेहर प्रभुवर तुम ही तो हो। तुम ही हो यजदान, तुम ही हो इज्जत, अल्लाह ईश्वर तुम ही तो हो। राम तुम ही हो बुद्धा, प्यारे गिरिवर तुम ही तो हो। परब्रह्म तुम ही हो ईश्वर, दया के सागर तुम ही तो हो। तुम ही पयंबर हो पुरुषोत्तम, ज्ञान के आगर तुम ही तो हो। हर में तुम हो, हर ही तुम हो, ज्योति प्रियवर तुम ही तो हो। निर्गुण तुम हो और सगुण भी, पी लीलाधर तुम ही तो हो। तुम ही निराले, तुम ही अकेले, सब में बसकर तुम ही तो हो। अविचल स्वामी, अविचल धामी, सबके ऊपर तुम ही तो हो। कर्ता कारक कर्म तुम ही हो, पालक गुरुवर तुम ही तो हो। साधन साधक और साधना मेहर प्रभुवर तुम ही तो हो। आगे पीछे ऊपर नीचे स्वामी घर घर तुम ही तो हो। परे परे हो, भरे भरे हो, सबके अंदर तुम ही तो हो। तुम ही कबीला, तुम ही वसीला, सकल चराचर तुम ही तो हो। ऊपर नीचे जहां कहीं भी एक बराबर तुम ही तो हो। तुम ही अगोचर गोचर भी हो, सब में हरिहर तुम ही तो हो। कोई नहीं है सिवा तुम्हारे, परम उजागर तुम ही तो हो। तुम ही हो इंसान, तुम ही पक्षी, मछली जानवर तुम ही तो हो। खटमल पीसू सांप और बिच्छू, चींटी मच्छर तुम ही तो हो। तुम ही हो कीड़ा, तुम ही हो घोड़ा, स्वान ब्रह्म खर तुम ही तो हो। हिरण तुम ही हो हाथी, बिल्ली बंदर तुम ही तो हो। चांद सितारे उषा तुम ही हो, रजनी दिनकर तुम ही तो हो। तुम ही हवा हो, तुम ही हो पानी, सारे जलचर तुम ही तो हो। चांदी सोना तांबा लोहा, पीतल पत्थर तुम ही तो हो। चाय तुम ही हो कॉफी, चीनी शक्कर तुम ही तो हो। तुम ही हो कागज किताब तुम ही हो, शाला दफ्तर तुम ही तो हो। कलम तुम ही हो स्याही, लेखक सुंदर तुम ही तो हो। द्वार तुम ही हो खिड़की, संगे मरमर तुम ही तो हो। तुम ही दवा हो, तुम ही बीमारी, वैद्य घरोघर तुम ही तो हो। खेल तुम ही हो खिलाड़ी, दर्शक प्रभुवर तुम ही तो हो। फूल तुम ही हो, शूल तुम ही हो, खुशबू शुक्र तुम ही तो हो। तुम ही हो गायक, तुम ही हो वीणा, मधुर मधुर स्वर तुम ही तो हो। नमाज तुम हो, कलाम तुम हो, जादू मंत्र तुम ही तो हो। तुम ही सिपाही, तुम ही हो लश्कर, सबके अफसर तुम ही तो हो। तुम ही हो माझी, तुम ही हो नौका, निर्मल सागर तुम ही तो हो। तुम ही हो किश्ती, तुम ही हो तूफान, मोतियों जौहर तुम ही तो हो। तुम ही हो साहिर, तुम नाखुदा हो, और समंदर तुम ही तो हो। तुम ही भिखारी, तुम ही हो दाता, दान मनोहर तुम ही तो हो। दास तुम ही हो स्वामी, प्रभु परात्पर तुम ही तो हो। माता पिता गुरु बंधु स्नेही, कुटुंब बिरादर तुम ही तो हो। सिवा तुम्हारे न कोई दूजा, हमेशा अवसर तुम ही तो हो। तुम ही जिगर हो,
दिल भी तुम हो, सबके दिलवर तुम ही तो हो। तुम ही हो प्रीतम, तुम ही हो प्रेमी, प्रेम सुधाकर तुम ही तो हो। सांस तुम ही हो जीवन, स्वामी मनहर तुम ही तो हो। तुम ही मका हो, तुम ही मकी हो, सबके अंदर तुम ही तो हो। तुम ही पुजारी, तुम ही हो पूजा, सबके परवर तुम ही तो हो। तुम ही चेतना, तुम ही साधना, मेहर प्रभुवर तुम ही तो हो। तुम ही हो ख्वाजा, कुतुब तुम ही हो, पीरो कलंदर तुम ही तो हो। तुम ही हो हाफिज, तुम ही सनाई, तारा सिकंदर तुम ही तो हो। ईसा तुम ही हो, तुम ही इलाही, पाक समंदर तुम ही तो हो। तुम ही हो कुरान, तुम ही नमाजी, वली पयंबर तुम ही तो हो। आदि तुम ही हो, अंत तुम ही हो, परे गुणाकार तुम ही तो हो। परम मनोहर, परम सहोदर, मेहर प्रभुवर तुम ही तो हो। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, भोला शंकर तुम ही तो हो। भाव कहता ओ प्यारे मेहर, सब शब्द और अक्षर तुम ही तो हो। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। So that was a beautiful recitation by our dearest Soumya, and Cyrus gave a little explanation, which just followed by the little video that we had of Bhauji sharing about You Alone Exist, which is one of the poignant writings for all of us that Baba left through Bhauji. And as Bhauji said, Baba very sweetly put his name to it after composing all those extra stanzas after the first six that Bhauji had composed. And the Hindi was the original version, and as in the video Bauji mentioned that he had later translated that into English. And now we are ready to meet our loving Mehernath ji and Raj Kalchuri from Meherabad on this lovely occasion of celebrating the life of Bhauji, who has been dear to all of us, and thankful for them to take out time and be with us out of all the important things that they have and all the other online events that they have to attend all the time. So thank you, Mehernath ji, for being there. And in his impeccable narrative, Mehernath ji will tell us stories from Bhauji's lives, Baba's life, his childhood possibly as well, and grasp all our heart and attention for the next 1 hour. And after that, for the last half an hour, after that will be question and answers and greetings. If anybody wishes to share, ask anything to Mehernath ji and Raj, then he can do that. So Mehernath ji, जय बाबा to all. Avatar Meher Baba ki jai. Just I will share Bhauji's stories, Bhauji's life also before he joined to Meher Baba. Just I will start from the two couplets of the ghazal what Bhauji composed, and that दोनों तरफ से इश्क में बर्बादी अपनी, दोनों तरफ से इश्क में बर्बादी अपनी, परवाना परवाना जलाकर रह गई, शमा भी खुद जलकर, परवाना जलाकर रह गई, शमा भी खुद जलकर. That is the love, one has to destroy himself, and that is the love for the God. And how to love him, he taught to the Mandli members. And just I will tell the incident stories, how Baba used to teach, how we should learn what is the spirituality, what is the obedience, what is his order, and how to follow his order. Bhauji, he joined to Baba in Dehradun
in 1953. When he joined Baba in Dehradun, 1953, Bhauji, he completed his degree. Exam also he completed, Master in Administration, and from Nagpur University, he was doing three courses: Master in Administration, Master in Science, and Law degree. At a time, 3 degree he was doing, and the last exam was there for the Master in Administration, and he completed that, and then he joined Meher Baba. The telegram, or later it came from the Nagpur University, for Bhauji, the convocation program to get the degree. That ceremony is there, and they invited Bhauji to come to Nagpur. And Bhauji, just Baba said, read the telegram. Bhauji, he read that telegram, and Baba said, now just my wish is that we can go and join the ceremony course in Nagpur. And Bhauji said, Baba, I don't want, because already master in the bachelor in agriculture, science, I got the degree, and I joined the ceremony, convocation ceremony, and I got the degree. I don't want to go, and I don't want to leave you. Now I'm here with you. And Baba said, no, this is my order. And Bhauji, then he said, okay, I will obey your order. And then Bhauji just left from Dehradun for Nagpur. When Bhauji went to the Nagpur, Bhauji, next day he went to the Nagpur University, and just he met with his friends, professor, college. Bhauji was very intelligent, and mostly they used to say Bhauji Panditji. It was Bhauji's nickname, Panditji, there in the university, Nagpur University, and everybody used to call him as a Panditji. Bhauji went there, he met all the professor, principal, and his classmate, and just he observed that the hall was decorated, outside big pandal was raised, for the ceremony, and just 2 days left, and Bhauji, he went there, and next day Bhauji met everybody, and Baba sent the telegram, come immediately. And Bhauji felt very happy. Now I don't have to attend the ceremony. That Bhauji felt happy, and just Bhauji, he went to the railway station. He purchased ticket, and just after 2 hours, the train was there for the north, and Bhauji just he boarded the train, and he came back to the Dehradun. And Baba just called Bhauji. He asked, what you did in these 2 days. And Bhauji told everybody, I met my friends, principals, and just even I borrowed the gown and cap also for the ceremony, but immediately I returned that to my friend, and I told my friend just he can return to the university that cap and gown. And Baba said, why I send you to Nagpur, because this was the last link with the world, and why I wanted to disconnect that link, and today your link is disconnected from the entire world. Now you are disconnected from the world. When we get connected to the God man, then automatically, step by step, that link, it gets disconnected, and that is the Baba's work. Even we are Baba lovers, all the Baba lovers, when we come close to the Baba, that is true, we suffer a lot of suffering is there, all the time suffering is there, and that suffering, because of that suffering, what happens, we get step by step fed up of everything, and that fed upness takes us to the God, and fed upness gets attachment with the God and detachment with the world, and that is the Baba's spirituality, and that is Baba's worship, that is the Shariat,
and through that, we get the disconnected. Our link is it get disconnected to the world, and Baba, it does that work for us. Other things, when Bhauji, he was in Nagpur. He was student in Nagpur University. He was doing three degree course: master in administration, master in science, and a law degree. That time the law degree was for 2 years. Now it is a 3 years course, but that time it was 2 years course. And Bhauji was doing that. Bhauji was not interested in spirituality or religious matter. He never attended all these religion things also. But in 1952, he was in this final year of the course, and just the big change came in Bhauji, big change, and he become fed up of everything, and he thought, his life is not for this education and that, and for the job, his life is for different thing, and he became very restless. When he became the restless, 1952, he just one time 14 days fast he observed, 14 days continuously. Then he used to lock himself in the room. Next time he just observed the 3 days fast without water. Then again 11 days fast he observed with water, totally continuously 11 days. And he became restless without reason. He also did not know why he is becoming more restless. Then one day he went to the Mahatma Gandhi ashram in Varda to join that ashram. And then he talked with the administrator and that, other people, about the ashram life and what they do. That people, they told him about the life of ashram. They took him into the entire ashram. They showed everything, and Bhauji did not like that. Bhauji thought this is not the spiritual thing, spiritual place, and he came back. After few days, again he went to the Ramakrishna mission. There is the ashram there in Nagpur, big ashram, and he went there. And that people, they told him about Ramakrishna Paramahansa, about Vivekananda, and then they said you can study that, the books and that, follow the books, and you will understand, the spirituality. Bhauji did not like that also, just he spent some time, 2-3 hours there in Ramakrishna mission, and then he came back to the Nagpur University. And what happened, his brother-in-law, he was the follower of Tajuddin Baba, and he came and he got that knowledge. Bhauji changing everything, his mind also. Then he told Bhauji, now for the peace, for the satisfaction, I am the follower of Tajuddin Baba. You also come there and bow down to the Tajuddin Baba. Bhauji did not like that, but Bhauji thought now his brother-in-law is requesting him, calling him. That's why Bhauji went there. When Bhauji went there, he just stood outside. He did not go inside in the tomb. His brother-in-law, he purchased all the rituals things, agarbatti and other things, garland, prasad, and he went inside. When he went inside, other people they started staring Bhauji. That's why Bhauji thought it is better just go what is bad in that and just bow down and come out. He went there, and just one big thought came in his mind automatically, and he said to Tajuddin Baba, if you are the real master, then you can show me the path, real path. And how that thought came in his mind, he also did not know, but that thought came, and he said to the Tajuddin Baba, if you are the real master, then you can show me the path. And then Bhauji, he came back. When Bhauji came back, Bhauji just met his administrator in college, and he discussed with him, and he said to Bhauji, now one thing you can do, I know the Rishikesh, some saint is there, and you can contact him. I will give you the address, and you can do the correspondence with that saint. And Bhauji agreed. Bhauji did that. The saint said, just in Rishikesh, next month you can come. I will take your interview, and if you fit, then I will allow you in my ashram.
And Bhauji thought it is really good. I can renounce everything, education and that and family. Sila was there. She was 7 months old. My mother was also there, and they were staying in Balaghat, Bhauji's maternal place. Bhauji went there to tell them, just I am renouncing the world and I will join the Rishikesh ashram. And before that, what happened, in newspaper, it came about Meher Baba in two line. Baba is coming to the Amravati. He will give darshan to Amravati and then he will come to Nagpur and Sauner to give darshan. Bhauji they just read that two sentence, two line in the newspaper, but Bhauji did not pay attention, no attention. And then he went to the Balaghat, his native place, to tell them, he's renouncing everything and he will join to the Rishikesh ashram. 7 days, Baba, just 3 4 days, Baba was there in Amravati, and Baba changed his mind, his trip, and Baba again he went back to the Meherazad and postponed the Nagpur trip and Sauner trip. And Bhauji came from Balaghat after 7 days. Again it came in newspaper. The Meher Baba is coming to give the darshan in Sauner on such and such date. And Bhauji is just surprised, why he went back to the Meherazad, it came in newspaper and again he is coming. And Bhauji did not understand that. But 31st December, Baba, he gave the darshan in Sauner, and Bhauji thought, now next month I am going anyway to the Rishikesh ashram. It is better I can go and take the darshan of Meher Baba also in Sauner, because his sister was staying in Sauner and brother-in-law, he was the mayor of Sauner. Bhauji went there. Bhauji just observed, big pandal, and Baba was giving darshan there. About 20,000 people, they were there. They attended the program, and big majority, big queue was there, and Bhauji also joined that queue. And when Bhauji's turn came to the Baba, Baba was smiling with each person, and he was just keeping his head, his hand on the head of the people, and in smiling, and different gestures also he was giving. But when Bhauji's turn came, Baba changed the face, and Baba did not see at Bhauji, and he gave the banana to Bhauji, and Bhauji just got shocked. Why Baba did that? Meher Baba did like that. He did not see at my face, and he turned the face, and Bhauji felt bad. But Baba gave him the banana, and Bhauji, he ate that banana with skin, with peel. And when he ate that banana, his inner life totally changed, and he became more restless for Baba. And then he came outside, and he did not know to whom to meet and how to contact Baba, because he wanted interview with Baba and personal interview. And just he started finding the people, and he just found one guy, Mr. Rangarao. He was from Andhra, and first time also he came along with his son, 10 years old son he brought. And Bhauji just asked him, I want Baba interview with Baba, personal interview, and if you help me that will become better. He said, I don't know anybody, just this is my first time here in Sauner. I came for Baba's darshan, but next month Meher Baba is coming to Andhra, and I will be the in charge there, and if you come there, I will just, settle the interview with Meher Baba. But here, now it is impossible for me. I don't know the people. I don't know Meher Baba's close one also. Then up to evening, Bhauji he was searching here and there, but Bhauji did not know what to do and how to contact Meher Baba. Then late night, he went to his sister's house, Nira Devi, and early morning he could not get the sleep full night. Early morning 4 o'clock he woke up, and he thought, now the Baba is staying there in the guest house, government guest house. I can go there and I can sit outside. Maybe somebody I will get, and I will get the entry inside.
and he just sat outside. Before that, his sister, she came and she asked, where you are going. And Bhauji lied her. He said, no, I am going for the morning walk. And she said, I will join you. And she went with Bhauji. Bhauji again came back. She gave some breakfast tea to Bhauji. Bhauji had that. And then she said, now you also go to sleep. I will also go to sleep. And Bhauji said yes. And then when she went inside, Bhauji just came to the PWD bungalow guest house and he sat outside. Bhauji thought, now how to do that, how to go inside, because he did not know anybody. But again Rangarao came and his son came, and Bhauji asked him, why you are here? He said, just Baba, yesterday he told me to Andhra people, just immediately next day they can go back to the Andhra, and that's why now we are living. But before that, my son is crying. He wanted, Baba's garland, rose garland, and for that purpose I came here, and he wants that. But now I also don't know the people how to enter inside and to whom to ask. Bhauji said, you can write down some note, I will take inside and I will ask. And he did that. And Bhauji wanted to enter inside, but the volunteer said, what you want? Bhauji told that, and he said, give me that note, I will take to Baba and I will bring the garland. And then he brought the garland. Bhauji took that, and the garland was yesterday's rose garland, and it was stale. The petals started falling down, and Bhauji started each petal to just pick and eat. He started eating that, and then he brought that garland to the Rangarao, and Rangarao, he said, now I am leaving, but when you come to Andhra, you come Andhra, I will just arrange your interview with Meher Baba. Bhauji just he sat till morning, but no response from anybody. And then just he met with two people. One, the Ramchandra Gadekar was there, and another person was Savak Kotwal. And Bhauji, he asked Ramchandra Gadekar, and he gave the avatar, the book, and he said, if you read this book, you will get all the knowledge of spirituality. What is the spirituality? Bhauji thought, I want the interview with Meher Baba, and this guy is telling me, read the book here, sit and read. And Bhauji just he met with Savak Kotwal, and Savak Kotwal just he started, telling about the chart and this and that. And Bhauji just thought, Meher Baba is here and he's now showing me the chart and this, that. And then he said, now you can, I will give the address and you can write to the his secretary Adi Kirani in Ahmednagar, and then he will arrange for your interview. And Bhauji thought, it is no good now. I can contact somebody else because Baba is here and he's telling, come to Ahmednagar for the interview. Then in the next day, Baba gave second darshan. Again, Bhauji, he went there. He stood into the queue, and Baba gave the banana to each one. Bhauji got the banana, and same thing Bhauji did. He ate that banana with the peels. And 2nd January 1953, 54, 53, Baba just wanted to give the darshan to Nagpur, and just he went to the Nagpur. Bhauji, after that, he also went to the Nagpur, but Bhauji did not know where to go and where to contact Baba, because he did not know the address, anybody's contact number. And second and third, just he was traveling here and there, searching Baba, his destination, his address. And then what happened, in newspaper it came, Meher Baba is giving darshan on the 4th in Gita Bhavan, Nagpur, and Bhauji felt very happy and he went to the Gita Bhavan. He had Baba's darshan. About the 10,000 people were there in Gita Bhavan, and just big crowd. He did not get the chance to discuss with Baba, talk with Baba. He came out, and the one guy, his name was Vibhuti, and Bhauji contacted him, and Bhauji told him, just I want Baba's interview with Meher Baba.
and you can arrange. And he said, I will do that. He went inside. He told Baba, one student is there, his name is Vir Singh Kalchuri, and he wants interview with you. And Baba said, tell the person, boy, just, Verma's, barrister Verma's name, place. I'm his resident. I'm staying there, and 2 o'clock, Bhauji can come there. Vir Singh can come there and meet me. And then 2 o'clock, Bhauji went to the place of Barrister Verma, and Baba asked Bhauji, just don't bow down to me, just stand and fold your hand. Bhauji did that, and then Baba said, just sit. Bhauji sat there. Erich was there, Pankaraj was there, other Mandali member. They were busy with the function. They wanted to arrange the afternoon program. That's why they went to the Gita Bhavan. But these two persons were there, Erich Bhai and Pankaraj. And Baba just asked Bhauji, what you want? And Bhauji just told, I want to stay permanently with you. And Baba said, what you are doing? Bhauji told about the education and that. And Baba asked him, when your exam is? Bhauji told, just after 2 months, I have to appear the exam. Then Baba asked, you will obey me? You will follow my order? And Bhauji said, yes, 100% I will follow. Pankaraji said, but Baba, he's new person. He doesn't know what is the order. First, we have to explain him the order. Baba said, don't worry. He is educated and he knows better than you what is the order and what is the obedient. You don't worry about that. Then Baba said to Bhauji, if I give the order, just you can take the clothes off, become just naked and go into the city. You will do that? Bhauji said, yes, I will do that. And then Bhauji just he started taking off the dress, his shirt, and Baba said, no, just wait. Then Baba asked him about family and everything, and Baba said, now after 2 months you can attend the exam, and when the exam is over, wherever, even I am there in Andhra or Dehradun or any other place, you can join me. And Bhauji felt happy. But before that, Bhauji said, Baba, now next month you are going to the Andhra trip tour, and I want to join that. Baba said, if your study is completed, then you can join, you can come. And then the second darshan, just Bhauji had in Andhra, he joined there, and then afterwards he came back. He attended the exam, and when that exam, after that exam, Bhauji directly he went to the Dehradun and he joined Meher Baba. And then Baba's order started, and first order Baba gave to the Bhauji. Now just from today, night time, 9 o'clock, go to each Mandli's room and knock at the door and just say that, you fool, keep silence, observe silence after 9. And Bhauji felt shocked because Bhauji was young and all the Mandli, they were senior and older one. And Bhauji thought, now what to do now? This is Baba's order, I have to obey. And night 9 o'clock, just perspiration started for Bhauji. He thought now what to do, how to say to these senior people. They are all elder one and senior people. Since long they are with Meher Baba. Even that Bhauji just, he got that little bit courage. He went to the Pendu's room. He knocked and he said, just Pendu opened the door. Bhauji said, you fool, just keep the silence after 9. And he said, yes, sir. Then he went to the Erech, Vishnu, Dr. Nilkant Godse, Nilu, and then he went to the William Donkin and he knocked the door. Donkin, he opened the door and Donkin said, yes, sir, I will observe the silence after 9. And then Gustaji already he was observing the silence, but when Bhauji said that, he felt happy and he smiled because he knew that, maybe this order is from Meher Baba. Then Kekobat was there and he was doing the prayer every night. 9 o'clock he used to do the prayer. He used to stood before Baba's photo and he used to do the prayer. And morning to evening,
he used to repeat Baba's name 1 lakh time, 100,000 time he used to repeat Baba's name, and every day that was his daily routine. And 9 o'clock he was doing the prayer. Bhauji knocked the door, he opened, and Bhauji said, "You fool, just keep the silence after 9." And he felt just bad, he annoyed. Second day, same thing, third day, fourth day, and he got very, very upset with Bhauji. Others, they got the knowledge, this is Baba's order, but Kekobat did not know. And then fifth day, he told Baba, this guy, he troubles me. I observe the silence, 9 o'clock, just I pray, and I never make the noise, nothing. And this guy, he comes and he says to me, "You fool, keep the silence after 9." And such type of the person, why he troubles me? And Baba smiled. Baba said, "He's doing such type of the thing with you. Okay, okay." And then sixth day, Baba told, "Now stop that, don't do that." And this is the order of the Lord, order of the Meher Baba. And just we have to dance on Meher Baba's tune the whole life, and that is the spirituality of Meher Baba. Every moment he is to get change. Bhauji was with Baba. One day he said to Bhauji, "Tomorrow you come at 5:45. Bhauji said, "Yes, Baba." And Baba used to repeat same sentence 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. And again he said, "Come tomorrow at 5:45. At what time you will come? 5:45. Again Baba repeated, "At what time you will come? 5:45. Again same repetition. And then Baba said, "I don't know, what happened to me, but I do that, I repeat the same sentence again and again, and why I repeat myself also I don't know." And then again he did that. Bhauji, just 30 minutes, 35 minutes, Bhauji said, "Yes, I will come tomorrow at 5:45, tomorrow at 5:45. And then next day, Baba said, "I want tomorrow you come at 5:30. At what time you will come? 5:30. At what time you will come? 5:30. 40 minutes, Baba was repeating same sentence, and Bhauji just repeating that same sentence. And then Bhauji got annoyed. And Bhauji said, "Yes, I said na very loudly, I will come tomorrow at 5:30, I am telling." And Baba said, "Just, I win and you lost, you lose, I won, you lost." Because Baba wanted that, that anger should come out, our weakness should come out. And Baba knew that how to bring that weakness out, that anger out. And then Baba used to repeat the same sentence again and again and again and again. And then at last people, they used to get annoyed, they used to get upset, anger. And then Baba used to say, "Yes, my work is done." And such type of the work the master was doing to bring out our all weaknesses. And he did all the time, he did with the Mandli members. And then step by step, they learn, how to follow him, how to obey him, and how to dance on his tune. Another thing, just I will also say some in Hindi also. Dr. Murthy was there, and when Murthy was there, he was in Guru Prasad, and just he made the three jerseys, three coat. One is blue color, one is pink color, one is white color, and one is yellow color. And just he wore that, and he came to Baba. And Baba said, "How you selected the yellow color? You completed the PhD. Who gave you the PhD? You are the foolish guy. You don't know the color combination." He thought, maybe Baba, he did not like the yellow color. Then next day he wore the pink color jersey. And he came there because Baba used to like that pink color. Baba's favorite color was pink, blue. And Baba said, "Now just," he asked to the Mandli, "This guy, he looks very ugly.
in this jersey. He doesn't know what to wear, and color combination also this guy doesn't know. Then he thought, Baba maybe he did not like my jersey and pink color. Then next day he wore the blue color, and Baba said, now today he's looking very ugly. And he asked Mandli, everybody they said, yes, Baba, the color doesn't fit to his body. And then fourth day, another white color, and same thing Baba repeated, and then he got very annoyed. And he said, you don't like yellow color, you don't like pink color, you don't like blue color, you don't like white color, then what colors should I wear? And Baba said, this color don't wear. The anger, it came out, only this color is bad, other pink, blue, white, yellow, all colors are good, only this color is not good, and never wear this color. And then he got that understanding, how our weakness used to come out. We are human being, normal persons, and Baba used to do that, and that is the spiritual work of the Meher Baba. We do the worship, puja, shariat. It gets simple because it is according to our mind, but according to his wish, according to his mind, to follow him, it is impossible. It is impossible, because every moment, we have to dance on his tune, and that dance is impossible because we have countless weaknesses within us, and Baba used to take that weaknesses step by step, and this is the Meher Baba's spirituality, and this is the Meher Baba's work. बाबा गणेश खिंड में थे, और भाऊजी को बाबा ने 5.5 months ऑर्डर दिया था कि भाऊजी एक टाइम खाना खाएंगे, इवनिंग को खाना नहीं खाएंगे, क्यों तो बाबा की ड्यूटी देते थे, नाइट वॉच करते थे, तो भाऊजी एक टाइम खाना खाते थे, और बाबा ने ऑर्डर दिया था एक टाइम में पूरा प्लेट फुल ले लेने का, सेकंड टाइम फिर जाना नहीं, और फिर से दूसरा सेकंड टाइम फूड लेना नहीं, एक टाइम में जितना ले सकता है उतना प्लेट में फुल भर देने का, और वो खाना। अभी गणेश खिंड में बहुत सारे न्यू पर्सन थे, न्यू कमर्स थे, सब बैठे वहाँ पर खाना खाने को, भाऊजी बैठे, और भाऊजी के प्लेट में फुल प्लेट था, खाना ज़्यादा था, फूड ज़्यादा था, सब लोग ऑब्जर्व करने लगे, और भाऊजी को बाबा ने बोले कि कुछ भी हो गया, मेरा ऑर्डर फॉलो करना, हैप्पीली खाना खाना, क्यों तो तू एक ही टाइम फूड खाता, दूसरे की केयर नहीं करना। और बाबा ने फिर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, पर्सन को किसी को पता नहीं, और बाबा बोलने लगे ये मेरा मंडली मेंबर, ये राक्षस है, ये जायंट है, देखो कैसा खाता, इसको बेशरम है, इसको शर्म नहीं है, ये देखो कैसा खाता। और सब लोग ऑब्जर्व करने लगे, और भाऊजी को पता था बाबा का ऑर्डर है, वो ऑर्डर फॉलो करना, वर्ल्ड की तरफ नहीं देखना है, दुनिया क्या सोचती है उसकी तरफ नहीं देखना। और भाऊजी खाना खाना शुरू किए, और बाबा कंटिन्यूसली भाऊजी को टॉर्चर कर रहे थे, देखो बेशरम, इसको थोड़ा भी शर्म नहीं है, ये खाना खाता है, ये क्वाइट भी नहीं होता है, छोड़ता भी नहीं फूड, ये छोड़ेगा नहीं, ये तो सब पूरा खाएगा। और सब लोग सोचने लगे कि ये आदमी कैसा है कि मेहर बाबा का ऑर्डर भी फॉलो नहीं करता, बाबा उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, फिर भी हैप्पीली खाना खा रहा है, उसको शर्म नहीं है। और सब लोगों को यही लगा कि ये पर्सन ऐसा कैसा है पर्सन। पर भाऊजी को जो बाबा का ऑर्डर था वो भाऊजी ने 100% फुलफिल किया। और ये है कि दुनिया में हम हैं, वर्ल्ड के अंदर है, 700 करोड़ का केयर करेंगे तो फिर बाबा का केयर कर नहीं सकते। और बाबा का जब केयर करेंगे तो 700 लोगों को निगलेक्ट करना है, और हम 700 करोड़ के पीछे हम दौड़ते, वर्ल्ड क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर वीकनेसेस है, और हम एवरी मोमेंट हम सोचते हैं कि वर्ल्ड ने हमको अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने हमको अच्छा बोलना चाहिए, और हम जो एक्ट करते हैं वर्ल्ड के लिए बिहेवियर रहता है, हम गॉड के लिए कभी उसका फॉलो करना ये मुश्किल रहता है। इसलिए हम वर्ल्ड की तरफ देखते कि वर्ल्ड क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी। और बाबा ने वो ट्रेनिंग दिए कि वर्ल्ड की केयर मत करो, वर्ल्ड के अंदर रहो, और वर्ल्ड के बन के मत रहो, गॉड के बन कर रहो। और वो है उनका दामन, परमात्मा का दामन हमने पकड़ना है। जैसा वो बोलते हैं कि 100 बार तेरा दामन हाथ मेरे आया, 100 बार तेरा दामन हाथ मेरे आया, और जब आँख खुली तो देखा अपना ही गिरिबा था। 100 टाइम उसका दामन तो हमने पकड़ा है,
और जब रियलिटी के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम कॉन्शियसनेस हुआ तो हमने देखा कि अपना ही हाथ था। हम जब कॉन्शियसनेस आ जाता है तो अपना ही हाथ हमने पकड़ा है, हमने किसी दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा है। तो गॉड तो हम ही है, पर हम अननोन गॉड है, हम ड्रॉप है और वो ओशन है। तो ये ड्रॉप को एक ना एक दिन वो ओशन के अंदर मर्ज होना है। तो जिगर मुरादाबादी भी बोलते हैं कि आईना खाना आलम में क्या देखा, कहीं क्या देखा, आईना खाना आलम में कहीं क्या देखा क्या आईना यानी मिरर, आलम में कहीं क्या देखा। और आँख का जब खुलती है तो हम देखते हैं कि अपना ही दामन था, अपना ही ये था। तो ये ध्यान में रखना है कि हम ही हैं ड्रॉप, और हमको जब परमात्मा में मर्ज होना है, उसके अंदर यूनाइटेड होना है, तो हमारे को हमारी वीकनेस खत्म करना है। और बाबा ने मंडली के साथ वही वर्क किया कि उनके वीकनेस खत्म करने का। और वीकनेस खत्म करने को स्पिरिचुअलिटी बोलते, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने वीकनेस खत्म करना। अपने एनिमीज है, एनिमीज कौन है? अपने वीकनेसेस है, जिसको हम लस्ट, थर्स्ट, ग्रीड, एंगर, ईगो, ये जो है ये हमारे वीकनेसेस है। और बाबा ने वो ट्रेनिंग दिया है कि अपने एनिमी को, विद इन अस, अपने एनिमी को खत्म करना, एंड दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। और बाबा ने 75 इयर्स में मंडली, उनके लवर्स, उनके जो ईगो है, उनका जो वीकनेसेस है, उनको किल करने का, अपने एनिमी को मारने का। मोहम्मद साहब ने भी यही बतलाया, काफिर को मारो। काफिर का मतलब क्या है? अपने एनिमी। अपने एनिमी, और कहाँ है एनिमी? अपने विद इन अस। सब पूरा वर्ल्ड काफिर है, सब वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर वीकनेस है, हमारे अंदर हम ही काफिर है। तो काफिर को खत्म करो, यानी अपने एनिमीज को मारो, अपने वीकनेस को मारो, एंड दैट इज द रियलिटी के अंदर, दैट इज द काफिर। लोग समझ नहीं सकते, पर काफिर यानी हमारे अंदर ही भरा वाला है, और अपने काफिर को मारना। और बाबा ने मंडली के लोगों के साथ ये वर्क किया, पूरा वो लाइफ बाबा ने वो काम किया। और बाबा ने स्पिरिचुअल पाथ क्या है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग क्या है, वो बाबा ने हम सबको ही बतलाया। जो बाबा प्रेमी है, तो हमको धीरे धीरे उनका दामन पकड़ना है, बाबा ने बतलाया उसके मुताबिक वर्क करना है, और धीरे धीरे बाबा की तरफ जाना है। हम देखते हैं मंडली के लोगों को बाबा ने वो ट्रेनिंग दी है। बारिया थे, बारिया काका बाबा के पास थे। गुलू करके उत्तर काशी से एक फीमेल डॉग बाबा ने लाए थे, और वो फीमेल डॉग लाने के बाद उसको 3 पपीज हुए। पपीज होने के बाद मेहराजाद में बाबा थे, और 3 पपीज होने के बाद बाबा ने बोले कि इमीडिएटली, बाबा का विश, बाबा की मर्जी, बाबा ने बोले 3 पपीज इसको दे दो करके, भाई सत्ता को, अहमदनगर के अंदर। बारिया बोले नहीं बाबा, मैं बहुत लव करता हूं उनके ऊपर, और मैं रखना चाहता हूं। बाबा बोले डिफिकल्ट है रखना, तू रख नहीं सकता है। बारिया बोले मैं रखूंगा, मैं उनको केयर करूंगा। बाबा ने बोले ठीक है। दोपहर को 3 o'clock मैं रिटायर्ड हो जाता हूं, और मैं रूम के अंदर जाता हूं। मेरे को बिल्कुल नॉइज नहीं चाहिए, डॉग का नहीं, किसी चीज का, एकदम क्वाइट चाहिए मेरा जात। तो एक्सेप्ट करेगा? वो बोले 100%। बाबा बोले दोपहर के 3 से मॉर्निंग के 7 बजे तक बिल्कुल डॉग का नॉइज नहीं आना चाहिए, पपीज का नॉइज नहीं आना चाहिए। और बारिया दोपहर को 3 बजे से अपना डोर बंद करते थे, पपीज को अंदर रखते थे, डॉग को अंदर रखते थे, और उसको मिल्क देना, फूड देना, बिस्किट देना, ये पूरा दिन कंटिन्यूसली 3 o'clock से मॉर्निंग 7 बजे तक अपने आप को लॉक कर देते थे रूम के अंदर, और बाबा को नॉइज नहीं आना चाहिए। 1 month बारिया ने वो किया, और बारिया फेडअप हो गए। और बारिया then he started praying, Baba, just Baba, now you can protect me, you can save me, I don't want these puppies, whatever you will say, I will obey your order, but now you can say that, just take these puppies to the Bhai Satta, and immediately I will do that. And then he started praying Baba every day. And after 1 month, Baba called him, and Baba said to Baria, now you will listen to me. And Baria said, whatever you say, I will listen, And Baba said, just
give these 3 puppies to the Bhai Satta, and that one guy will come and just give to him. And Bharya said, 100% I will obey your order, and whatever you say, I will accept that. And immediately, then he gave that 3 puppies to the person, and the person he took to the Bhai Satta that 3 puppies, and that is the how to follow his order, how to obey him. He was teaching to the Mandli members, and then Bharya, he got that idea how to obey him, and according to his tune how to dance in whole life. And then step by step, Mandli, they learned that, and then Mandli's life, it became changed. They became the dead body, they dead mind, dead body, everything. And then whatever the master used to say, they used to their body, that mind also, according to his wish, according to his order. And then step by step, all of them, they learn what Baba wants, and that is our work, to obey Baba. How to obey, because countless weaknesses are within us, but step by step, when we read Baba's book, what Baba was giving the instruction, orders to the Mandli members, if we learn that, we get that idea. And step by step, within us, we get change. Outside, we don't have to change, because Baba never gave any dress code, he never gave any food code, no membership, no society. He says just the whole world belongs to him who has taken birth in this universe. The person is his member. That's why there is no need. Whole world is his ashram, and each heart is his temple. Then there is no need, to make separate ashram or separate temple, because every heart is his temple. And one chair, he said very nicely, दिल का दरवाजा है, दिल का दरवाजा है, दिल खोलता कोई नहीं, मैं कौन हूँ जानता कोई नहीं, हर जगह मौजूद हूँ पर देखता कोई नहीं. Then that 7 curtain, the within us, we have to break, we have to open that, and that is our work. And Kabir also said, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे. We have to break all these wheel step by step. And what is the wheel? Our weaknesses: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Machhar, and Ahankar. These 7 weaknesses, we have to break the wheel, the curtain, and then what we'll find? God is within us. He is not outside. He is not everywhere. He is everywhere. He is in each particles, but He is within us, and we have to become conscious of for the God, and that is Meher Baba's work, and Meher Baba is doing, about that. आईना खाना आलम में कहीं क्या कुछ देखा, तेरे तमाशे में न खुद अपना तमाशा देखा. Then this is the worldly drama, tamasha, and that tamasha we are doing, but step by step we get that idea. We are the God, we are the one with God, but we have to clean our weaknesses within us. And Baba did with Mandli, and same path we have to travel. Same path, same thing is there, and we have to travel. हाँ, बाबा के टाइम बहुत सारे हम देखते हैं मंडली मेंबर्स को भी बाबा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते थे. बाबा गुरु प्रसाद में थे, नेरलेकर करके एक पर्सन बाबा के पास आए, ब्राह्मण्स थे, पुना के थे, स्कॉलर थे, बहुत एजुकेटेड थे, और बाबा को बोले कि मेरे को गॉड रियलाइजेशन चाहिए. बाबा बोले बहुत अच्छा, तो मेरा ऑर्डर फॉलो करेगा? वो बोले जो भी बोलेंगे 100% फॉलो करूँगा. ब्राह्मण गाय, उसने कभी लाइफ में नॉन वेजिटेरियन खाया नहीं, और बाबा ने बोले अगर तेरे को स्पिरिचुअलिटी चाहिए, गॉड रियलाइजेशन चाहिए, तो विद इन 1 वीक मैं दूंगा तेरे को, तेरे को मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा. और निर्लेकर ने बोला 100% करूँगा, और बाबा ने बोले फ्रॉम टुमारो यू कैन ईट द नॉन वेजिटेरियन फूड, ड्रिंक द लिकर, and go to the prostitute.
in 7 days. And 100% I promised you, I will give you the God realization. And he got very upset. He said, I am Brahmin. I never touch the non-vegetarian food. I never drink liquor. I am very good person, and it is difficult for me to follow all these things, what you said, and that is not the spirituality. Baba said, that is the spirituality. I am telling you. And he said, no, I will not follow that. Then Baba said, okay, another order I am giving you. और फिर बाबा ने दूसरा ऑर्डर दिया. बाबा बोले कि तू यहाँ से पैदल हिमालय जा, जॉब छुट्टी ले और जॉब को लीव लेने के बाद हिमालय जा, पैदल जा, खुद का पैसा यूज करने का, किसी से पैसा लेने का नहीं, और बेयर फुटेड यहाँ से हिमालय जा, हिमालय में रहे, वहाँ पर मेडिटेशन कर और वापस आ. और वो बोला दिस इज द स्पिरिचुअल थिंग एंड आई विल फॉलो दैट 100%. क्यों? तो हमारे माइंड को अडॉप्ट हो गया, एक्सेप्ट होता है. हमने जो ट्रेडिशनल किया है, परंपरा किया है, उसने एक्सेप्ट किया. और वो बोला बाबा नाउ विद इन 2-3 days आई विल लिव. और बाबा बोले बहुत अच्छी बात. और वो चला गया, हिमालय गया. बाबा न्यू लाइफ में चले गए और वो हिमालय चला गया पैदल. बेगिंग करता था, किसी से पैसे लेता नहीं था, ओनली फूड. बाबा ने बोला था बेग करके खा तू. वो बेगिंग करके फूड खाता था और हिमालय चला गया. 1 year वो हिमालय में रहा. बाबा न्यू लाइफ के अंदर थे और आफ्टर 1 year वो आ गया, वापस आ गया. बाबा का न्यू लाइफ कंप्लीट हो गया. और बाबा फिर पुनः गए और बाबा ने इंक्वायरी किया कि नेर्लेकर की फैमिली, नेर्लेकर कैसा है. तो नेर्लेकर के फैमिली को बुलाया गया और बाबा ने पूछे नेर्लेकर कैसा है. तो नेर्लेकर को भी बुलाया. तो उसने बोला बाबा मैं बहुत हैप्पी हूँ और मेरे को स्पिरिचुअल पाथ मिल गया, इनर मेरे को हैप्पीनेस मिल गया और मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को रियलिटी के अंदर गॉड मिल गया. बट आफ्टर सम टाइम्स ही स्टार्टेड टेकिंग द लिकर. According to his own wish, he started taking the liquor, he started going to the prostitute, and non-veg also he started eating. And then his family, they came to Baba and they said this guy totally spoiled and he doesn't listen to us, and now he started all these dirty things. And Baba wanted, to clean his sanskaras. That's why Baba told him do this. Baba never wanted he do in action, but he never accepted that also. I will not do because that is against of our religion, against of my will. But as his own wish, after that he started taking the liquor, non-veg, and then he started going to the prostitute also. And Baba said this is the life of the people. They never listen to the master never said do in action, but Baba wanted just he should listen, he should accept. Baba never wanted that he should in the action, but even that he never accepted that. He said that is my religion, and against of my religion, against of my faith, against of my tradition. But when Baba's wish was there, he never obeyed. But according to his wish, after he went to the Himalayas, 1 year he spent there. Afterwards he came and at his own he started all these things. इसलिए बाबा को हमारे जो संस्कार क्लीन करने के एटलीस्ट हमने एक्सेप्ट करना है, एटलीस्ट हमने बोलना है कि यस हम कर लेंगे. पर हम कभी सुनते नहीं. क्यों? तो हमारा ट्रेडिशन होता है, हमारा परंपरा होता है, उसको हम इतना स्टिक हो गए. तो बाबा वो तोड़ना चाहते, सब तोड़ना चाहते. और जब हम उसमें यूनाइटेड हो जाते तो बाबा डिटैच करते उससे, और जो एक्सेप्ट कर लेता है उसका एक लाइफ अलग हो जाता है. पुणे में अग्रवाल करके एक पर्सन मेहर बाबा के पास नागपुर से आए. नागपुर से आने के बाद उन्होंने मंडली हॉल में बाबा ने बुलाया, बाबा का दर्शन किए. दर्शन करने के बाद एरज भाई बोले तूने दर्शन किया, अभी तू जा घर, नागपुर चला जा. वो बोले मेरे को दर्शन चाहिए. उन्होंने बोला फिजिकली बाबा यहाँ बैठे, तूने दर्शन किया और क्या चाहिए तेरे को? बोला मेरे को दर्शन चाहिए. कंफ्यूजन में आ गए एरज भाई कि इसने तो दर्शन किया बाबा के और फिर बोलता है आगन दर्शन चाहिए. तो बाबा ने बोले उसको कौन सा दर्शन चाहिए? जो लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुना को दिया था वो दर्शन उसको चाहिए, उसको ये फिजिकल फॉर्म का दर्शन नहीं चाहिए. वो बोला एक्यूरेट,
बाबा ने मेरे माइंड रीड किया और मेरे को वो दर्शन चाहिए। तो बाबा बोले ठीक है, वो दर्शन मैं तेरे को दूंगा, पर तो उसके अंदर तेरा डेथ हो जाएगा, तू मर जाएगा, तेरी कैपेसिटी नहीं है ग्रॉस आइज से दो दर्शन लेने की, तू यू कैपेबल नहीं है, और मैं तेरे को वो दर्शन दूंगा। वो क्या है? वो यूनिवर्सल फॉर्म है गॉड का, और यूनिवर्सल फॉर्म के अंदर पूरा ग्रॉस वर्ल्ड, ग्रॉस प्लैनेट, सब कुछ वो फॉर्म के अंदर आता है, यूनिवर्सल फॉर्म के अंदर। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और वो स्केरी फॉर्म है। अगर तू वो देखेगा तो तू उसके अंदर अनकॉन्शियस हो जाएगा या डेथ हो जाएगा तेरा। तो तेरे को अगर वो देखना है फॉर्म, तो मैं तेरे को 100% दिखाऊंगा, और तू मर जाएगा, तेरी फैमिली, तेरे प्रॉपर्टी सब तू लूज हो जाएगा। तो तेरे को एक्सेप्ट है, तेरे फैमिली को तू मिल नहीं सकेगा, और तेरा डेथ हो जाएगा। तो एक्सेप्ट करता है। वो बोला नहीं बाबा, मेरे को नहीं मरना, मेरे को यूनिवर्सल फॉर्म नहीं होना, मैंने आपके दर्शन किया, दैट इज सफिशिएंट। तो ये है कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा ने जब अर्जुना को वो फॉर्म दिखाया, तो अर्जुन अनकॉन्शियस हो गया था। अर्जुन अनकॉन्शियस हो गया था। वो फॉर्म जो यूनिवर्सल फॉर्म है, उसके अंदर पूरे प्लैनेट है, पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्सल उसके अंदर है, और वो एक स्केरी फॉर्म है, गॉड का ग्रॉस फॉर्म है वो, और वो देखना ग्रॉस आइज से इम्पॉसिबल है, तो कोई भी नहीं देख सकता है। और जब बाबा ने उसको बतलाया, तो अग्रवाल ने एक्सेप्ट किया कि यस बाबा, आई डोंट वांट योर यूनिवर्सल फॉर्म। तो डिफरेंट लोग बाबा के पास आते थे, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से आते थे, और बाबा उसका आंसर देते थे, उसका रिप्लाई देते थे। बाबा माइंड रीड करते थे, और ये इसको मिरेकल्स भी नहीं बोलेंगे, इसको एक्सपीरियंस भी नहीं बोलेंगे, इसको अनुभूति भी नहीं बोलेंगे, इसको विजन भी नहीं बोलेंगे। गॉड के पास जब हम रहते हैं, तो एवरी मोमेंट, एवरी क्षण ये एक्सपीरियंस आते हैं, ये चमत्कार, हम उसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, और वो चमत्कार भी नहीं है, क्यों? तो ये तो गॉड का इनर वर्ल्ड है, और इनर वर्ल्ड में एवरीथिंग इज पॉसिबल। घोस्ट के बारे में हम जिनको सोल बोलते हैं, सेटल वर्ल्ड के अंदर, भाऊजी जब मेहराजाद में थे, मंडली लोग भी थे, डेली ये सोल वहाँ पर आते थे मेहराजाद में, पुणे के अंदर गुरु प्रसाद में सोल आते थे। भाऊजी जब राइटिंग वर्क करते थे इवनिंग टाइम को, तो लैंटर्न रहता था वहाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो भाऊजी टेबल पे रखते थे, भाऊजी राइटिंग वर्क करते थे। बहुत सारे सोल भाऊजी के आजू बाजू आकर बैठ जाते थे, और भाऊजी के बाजू में बैठने के बाद भाऊजी उनके लिए कुछ बीड़ी जो होती है, इंडियन बीड़ी या सिगारेट के पैकेट, मैच बॉक्स टेबल पे रखते थे, वो लेते थे, वो स्मोक करते थे, और बैठते थे थोड़ी देर, और चले जाते थे उठकर। बाबा ने बोले उनको देखना भी नहीं, उनको डिस्टर्ब भी करना नहीं, वो आएंगे, कुछ करेंगे नहीं, वो बैठेंगे और चले जाएंगे। तो वो आते थे, मंडली के पास आते थे। वो एक सेंट था, वो मेहराजाद में जब नाइट वॉच के लिए मंडली के लोग जाते थे, तो वो अंडर द ट्री बैठा रहता था, और बाबा को मंडली के लोगों ने बताया कि एक सेंट यहाँ पर आकर बैठता है, वो कौन है? तो बाबा ने बोले बहुत अच्छा सोल है, उसने सुसाइड किया था, इसलिए वो रीबर्थ के लिए मेरे पास आता है, तो उससे कोई हार्मफुल नहीं है, उसको बैठने दो, उसके तरफ देखना भी नहीं, उससे बात भी नहीं करना, उसको कुछ पूछना भी नहीं, नीचे सिर डालकर जाना और नीचे सिर डालकर आना। 6 मंथ तक वो वहाँ पर आता था, और 6 मंथ के बाद बाबा ने बतलाया कि मैंने उसको रीबर्थ दे दिया। तो यह है गॉड का वर्क। हम जैसे ग्रॉस बॉडी के लोग आते, वैसे सेटल बॉडी के भी लोग गॉड के पास आते, जिसको हम सोल बोलते हैं, और ये सोल डे एंड नाइट गॉड के पास आते थे। बाबा सातारा में थे, मंडली के लोग क्या करते थे, नाइट को लॉन्ड्री बाहर रख देते थे, मसाला बाहर रख देते थे, वेजिटेबल बाहर रख देते थे, यूटेंसिल्स जो थे सब पूरा बाहर रखते थे, और ये सोल आकर मसाला भी ग्राइंडिंग कर देते थे, लॉन्ड्री कर देते थे, यूटेंसिल्स धो देते थे, क्लीन करते थे, और रात के टाइम सब करके वो एक साइड को रख देते थे, और फिर मंडली के लोग सवेरे कलेक्ट करते थे। और बाबा ने बतलाया कि वो तुम्हारे को कोई हार्मफुल नहीं है, वो मेरी सेवा
करने के लिए यहाँ पर आते, और उनको जब चांस मिलता है सेवा करने का तो वो मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आते। और क्यों तो उन्होंने सुसाइड किया, रीबर्थ जल्दी मिलता नहीं। फॉर द रीबर्थ दे यूज्ड टू कम टू द मेहर बाबा, दे यूज्ड टू कम टू द गॉड। ऐसा एक सोल था जो बाबा के कस्बा पेट में झोपड़ी के अंदर बाबा के वो वहाँ पर रहता था। और बाबा ने बतलाया कि वही सोल जब बाबा मंजिल में दादर में गए तो आश्रम के अंदर भी वो बाबा के साथ बाबा जब गए तो वहाँ पर भी गया। और वहाँ पर जब क्रिकेट का ग्राउंड बाबा ने बैक साइड को क्रिकेट का ग्राउंड तैयार करने के लिए बतलाया, तो नाइट टाइम वो क्रिकेट का ग्राउंड तैयार करता था और उसका नॉइज होता था जोर जोर से। तो मंडली के लोगों ने बाबा से पूछा ये किसका आवाज है, तो बाबा ने बोले वो सेम सोल जो पुणे के अंदर था, झोपड़ी में वहां पर रहता था, वही मेरे साथ इधर आ गया और वो मेरा सर्विस कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो जैसे हम ग्रॉस वर्ल्ड के लोग गॉड का सर्विस करते, गॉड की सेवा करते, वैसे ये सोल जो मेहराजाद आते थे, पूना में आते थे, सातारा में आते थे, मंजिल में मैं बाबा के साथ रहते थे और बाबा का वर्क करते थे। क्यों तो उनको रिबर्थ मिलना है, उनको रियलाइजेशन मिलना है। इसलिए रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि रिबर्थ है, उनको रिबर्थ मिलता है और रिबर्थ के लिए वो बाबा के पास आते थे और सर्विस करते थे। वो बोलते हैं तुलसीदास के एक घड़ी आध में पुण्याद कर सेवा संतन की कटे कोटि अपराध। एक मोमेंट, आधा मोमेंट, आधे से आधा मोमेंट भी अगर हमको मास्टर की सेवा, उसकी सर्विस करने को मिली तो हमारा लाइफ चेंज हो जाता है, हमारा जिंदगी बदल जाती। और वो फॉर्चुनेट हम लोग हैं कि बाबा के पास आते, बाबा का वर्क करते। सभी लोग बाबा प्रेमी भी आते, वहाँ पर एक मोमेंट भी वर्क मिला, समाधि की सेवा मिली, बाबा की सेवा मिली, वहाँ रहने का चांस मिला, तो लाइफ बदलता। और यह है इबादत, यह है वर्शिप, यह है पूजा। और ऐसी पूजा वर्ल्ड के अंदर हजारों साल भी करेंगे तो नहीं होता है, और गॉड के साथ रहने से एक मोमेंट के अंदर हालत बदल जाते, जिंदगी बदल जाती, लाइफ बदल जाता है। और ये हमको एडॉप्शन करना है। मैं कुछ मेरे भी स्टोरीज बतलाता हूँ इंसिडेंट बाबा के साथ। मैं 9 to 10 ईयर्स का था, तब तक मैं लेडीज मंडली के साथ खाना खा सकता था। शीला, मैं और हमारी मम्मी तीनों भी हम बाबा के साथ खाना खाते थे। मेरा माए लेडीज मंडली रहते थे। फिर बाद में मेरा माए ने बोला मेहरनाथ ग्रोन अप हो गया, ही इज नाउ 10 ईयर्स ओल्ड, अभी मेहरनाथ जेंट्स मंडली के साथ खाना खाएगा, शीला और रमा जब भी आएंगे तो लेडीज मंडली के साथ बैठेंगे। तो वो लेडीज मंडली के साथ बैठते थे और मैं फिर जेंट्स मंडली के साथ खाना खाने लगा। लंच के लिए जब हम जाते थे तो बाबा गुरु प्रसाद में थे। गुरु प्रसाद में बाबा को ड्यूक सोडा बहुत पसंद था, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ ड्यूक सोडा। तो ड्यूक सोडा डॉक्टर गवेर ने बाबा के लिए बॉटल लाई, ओपनर से उन्होंने ओपन किया, ग्लास के अंदर ये किया और बाबा ने हाफ ग्लास पिया और आधा ग्लास मेरे को दिया। आधा ग्लास मेरे को दिया तो मैं बाबा का प्रसाद है करके, सिस्टर बाजू में बैठी थी तो मैंने जेस्टर से उसको बोला अपन बाहर जाएंगे और दोनों शेयर करेंगे, दिस इज मेहर बाबा प्रसाद। तो मैं जब सोच रहा था तो बाबा ने बोले किधर जा रहा है, मैं बोला कहीं नहीं, मैं थोड़ा डर गया। बाबा बोले बैठ जा एक जगह, मैं बैठ गया। बाबा बोले पी ले अब भी, क्या अभी मेरे सामने, मैंने पूरा पी लिया डर के। और बाबा बोले कि मेहरनाथ ये तेरे को मैं प्रसाद क्यों देता हूँ, क्यों कि तेरे को चांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मेरे साथ खाना खाने की, शीला को और तेरे मम्मी को अपॉर्चुनिटी मिलती है पर तेरे को नहीं मिलती, इसलिए मैं तेरे को प्रसाद देता हूँ और तू किसी के साथ शेयर नहीं करना, तूने अकेले ने ले लेना। तो मैंने फिर वो प्रसाद अकेले ने पिया। ट्वाइस आई गॉट दैट चांस टू ड्रिंक द सोडा, ड्यूक सोडा, व्हाट बाबा हैड, हाफ ग्लास एंड हाफ ग्लास, जस्ट ट्वाइस ही गिव टू मी। एक बार बाबा कार्ड्स खेल रहे थे लैरिस्क और मंडली 25-30 पीपल थे। बाबा ने मेरे को बोले तू भी कार्ड्स खेल,
मैं बोला बाबा को, बाबा मेरे को ABCD नहीं आती है कार्ड्स की, मैंने कभी लाइफ में खेला नहीं। बाबा बोले मैं तेरे को ट्रेन करूंगा, तेरे को सिखाऊंगा कैसा खेलना, जब तेरा टर्न आ जाएगा तो तू मेरे को कार्ड्स दिखाना और मैं तेरे को बतलाऊंगा कौन सा कार्ड्स खेलना। तो फिर मेरा टर्न जब आता था तो मैं बाबा को कार्ड्स दिखाता था, तब सब मंडली के लोग भी देखते थे वो कार्ड्स, और फिर बाबा मेरे को बोलते थे ये कार्ड खेलो, वो कार्ड खेलो, तो फिर मैं वो कार्ड खेलता था। तो 2-3 बार मेरे को ये चांस मिला बाबा के साथ कार्ड्स खेलने का। हम मेरा साथ जाते थे, बाबा का ट्रेनिंग रहता था, ओबीडियंट क्या है, ऑर्डर्स क्या है, वो बाबा ट्रेनिंग देते थे। तो बाबा ने एक बार मेरे को खड़ा किया, जस्ट स्टैंड अप, और मैं खड़ा हो गया। बाबा ने बोला तू सबसे ज़्यादा लव किससे करता, और मैं इनोसेंटली मैं बोला सबसे ज़्यादा लव मैं मदर के ऊपर करता हूँ और फिर फादर के ऊपर करता हूँ। बाबा डिड नॉट लाइक माय रिप्लाई एंड ही सेड जस्ट सिट डाउन, वेरी लाउडली एरज भाई सेड जस्ट बैठ जा, and just I sat, and then Baba same thing he said to Sila, just stand up. She stood up, and Baba asked the same question to her, and she said, Baba, just at most I love you, then I love my father, and then I love my mother. And Baba said okay, and Baba satisfied with her answer, and then he told me just now you stand. I stood, and he said now you can repeat the same answer. And just I repeated, I said, Baba, first at most I love you, then I love my mother, and then my father. And then Baba said, anytime if I raise that question, I ask that question, you must reply, and same thing you must reply, first God and then afterwards the world. And then this is the order, this is the obedient. And I said, yes Baba, now next time when you ask, I will follow that. At most we should love God, God should be there, and then entire world. But most of the time we forget that. But Baba, he used to teach that, he used to tell that, how to love God, how to follow him, and step by step, I learned each time when we used to go to the Mehernath, he used to give the instruction, he used to tell how to obey God. Once हम लोग गुरु प्रसाद में थे और बाबा ने मेरे को बतलाया, क्या तू मैं जब आ जाऊंगा तो रूम के अंदर बैठना, मेरे नजदीक बैठ, जो मंडली लोग थे वो वॉल के नज़दीक बैठते थे, तो मैं भी उधर जाकर बैठता था, बाबा से डिस्टेंस में बैठता था। बाबा बुलाते थे और बाबा बोलते थे सिट नेक्स्ट टू माय लेग, और मैं फिर बाबा के नज़दीक बैठता था। तो एक टाइम एक फैमिली आई, 3 चिल्ड्रंस थे, हस्बैंड वाइफ थे, और बाबा ने उनको बुलाया और सामने बिठाया, और बाबा उनसे डिस्कशन कर रहे थे अबाउट एजुकेशन ये वो, और मेरे को थोड़ा ऑड लगा। तो मैं बोला कि अभी बाबा तो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं फैमिली मेम्बर से, तो मेरा यहाँ इधर बैठना ठीक नहीं है। तो मैं उठकर एरज भाई के साइड में जाकर बैठ गया। बाबा ने 20 मिनट्स के आफ्टर वो लोग चले गए, बाबा ने मेरे को बुलाया, सामने खड़ा किया। बाबा बोले तूने मेरा ऑर्डर क्यों तोड़ा? और मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया कैसा ऑर्डर है क्या है। तो बाबा बोले मैंने तेरे को ऑर्डर दिया था कि मेरे नज़दीक बैठने का, और तू उठ के क्यों गया? मैं बोला बाबा वो फैमिली थी, आप उनसे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं सोचा कि उनको चांस मिलना करके मैं एरज भाई के वहाँ पर जाकर बैठ गया। बाबा बोले तू उनकी केयर करता है, तू मेरी केयर नहीं करता है। बाबा बोले जब मैंने तेरे को ऑर्डर दिया तो तू वर्ल्ड की केयर मत कर, लोगों की केयर मत कर, मेरी केयर कर, मैंने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करो। तूने उनको देखता है, उनकी केयर करता है, और उनके लिए तो उठकर चला गया, तू मेरे लिए नहीं गया। मैंने जो बतलाया था तो तूने डिसोबे किया, मेरे को वो नहीं करना चाहिए। फिर मैं बोला बाबा 100% अभी नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे व्हाट इज द ओबीडियंट, व्हाट इज द ऑर्डर, ही इज टू टीच मी, ही इज टू टीच सीला आल्सो, ही इज टू टीच मी। और फिर धीरे धीरे हमारे को वो अंडरस्टैंडिंग होने लगी। और मैं तो बहुत सारा बाबा के पास भी बैठता था तो डिसिप्लिन के अंदर बैठता था, कभी नॉइज भी नहीं करता था, और इसके कारण हमको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती थी। गुरु प्रसाद में भी बाबा बुलाते थे, कभी 6 डेज रखते थे, कभी 20 डेज रखते थे, कभी 25 डेज रखते थे। अपस्टेयर जो रूम था, हॉल था, वहाँ पर हम रहते थे। और बाबा बोलते थे ये दोनों किड्स है, ये कभी नॉइज नहीं करते, डिसिप्लिन में रहते करके इनको मैं चांस देता हूँ, इनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ।
एक बार बाबा ने हमको बुलाए, समर में थे, और बाबा ने बतलाया कि 3 डेज तुम यहाँ पर रहो और 3 डेज के बाद जाओ। मेरा माई थी, मेरा माई बोली बाबा 3 डेज बहुत कम होते, एटलीस्ट 6 डेज। बाबा बोले ओके 6 डेज, 6 डेज रहो। मम्मी को लगा क्या बाबा 3 डेज का 6 डेज किया, तो मम्मी बोली बाबा बच्चों को हॉलीडेज है, समर हॉलीडे है, तो 15 डेज रखो। बाबा ने बोला नहीं, पहले मैंने 3 डेज बोला, मेरा ने 6 डेज बोली, मैंने एक्सेप्ट किया, तो तुमको भी एक्सेप्ट करना है। अभी कोई क्वेश्चन रेज मत करो और डिमांड भी मत कर क्या और 15 डेज रहने का, 20 डेज, ओनली 6 डेज रहो और फिर 6 डेज के बाद चले जाओ। तो बाबा, मेरा माइंड और बाबा का जो सोल था वो कनेक्ट था, यूनाइटेड था, ये हमको ध्यान में रखना है। फिजिकल बॉडी नहीं थी पर सोल यूनाइटेड था। जो बाबा के थॉट्स थे उसी मोमेंट को मेरा माई के भी वो सेम थॉट थे, सेम थॉट आते थे। क्यों? क्यों तो ओशन से वो मर्ज हो गई थी, ओशन से यूनाइटेड हो गई थी, गॉड से वन हो गई थी। तो वहाँ बॉडी नहीं, वहाँ सोल का यूनाइटेड था। और जब मेरा माई बोलती थी तो बाबा हर चीज़ एक्सेप्ट करते थे। उन्होंने जो भी बतलाया बाबा को, तो ये हमको याद रखना है कि परमात्मा से जब वो सोल कनेक्ट हो जाता है तो एक लाइफ अलग होता है। हम देखते लैला मजनू का भी जो सोल था वो भी यूनाइटेड हो गया था। लैला को जो थॉट आते थे उसी वक्त मजनू लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहता था, तो मजनू को भी वही थॉट आते थे। वो एक बोलते हैं, कपलेट है एक, लैला है आओ गिल तो हजारों हजार है, लैला है आओ गिल तो हजारों हजार है, जो है मजनू की रूह वो लैला ही आओ रे। वर्ल्डली लैला तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स है, पर जो रूह यानी सोल जो मजनू से यूनाइटेड हो गई, वन हो गई, वो लैला ही आओ रे, वो सोल है, वो गॉड से कनेक्टेड हो गई। वो सोल एक अलग सोल रहती है। वर्ल्डली सोल तो काउंटलेस लोग हैं पर वो गॉड से यूनाइटेड नहीं। क्यों? तो वीकनेस है, डिज़ायर है, और जब डिज़ायर है तो हम गॉड से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए वी हैव टू लीड आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज विश, उसके विश के मुताबिक चलने का हमारे को ट्रायल करना है, और धीरे धीरे हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। और बाबा ने मंडली के लोगों को डेड बॉडी बना दिया था। ऐसी डेड बॉडी थी कि वो अपना फिजिकल फॉर्म भी बाबा की मर्जी के, इसके विश के मुताबिक वो यूज करते थे, अपना माइंड भी बाबा की मर्जी के मुताबिक यूज करते थे। उनके लिए अपना खुद का माइंड भी नहीं था, खुद की बॉडी भी नहीं थी। बाबा ने जो खाने के लिए फूड बोला वो खा लेते थे, बाबा ने जो बतलाया उनको वो एक्सेप्ट कर लेते थे, और बाबा के ऑर्डर के मुताबिक, ओबीडियंट के मुताबिक वो चलते थे। 67 में बाबा ने सब रिस्ट्रिक्शन क्लियर कर दिए, ऑर्डर निकाल दिए, और बाबा बोले आज से तुम टोटली फ्री है, तुमको जो खाना है वो खाओ, जैसा रहना है जो वैसा रहो, जो कपड़े पहनना है वो पहनो। मंडली के लोगों ने बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जो फूड बतलाएंगे वही खाएंगे, आप जो ड्रेस देंगे वही पहनेंगे, हमारी मर्जी के मुताबिक हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपके विश के मुताबिक, आपके मर्जी के मुताबिक हम हमारा लाइफ लीड करेंगे। ये है डेड बॉडी। अपना बॉडी का भी केयर नहीं, अपने माइंड का भी केयर नहीं, और जैसा गॉड लीड करता है लाइफ वैसा हमको लीड करना है, वैसा हमको रहना है। देन everything is possible, even in one life also will change, will get the realization और liberation। एक लाइफ के अंदर भी सब कुछ हो सकता है, पर जब हम अपने मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो 84 lakhs लाइफ में भी कुछ नहीं हो सकता है। हम साइकिल रिसाइकल आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आना और जाना। कबीरदास बहुत अच्छा एक उनका कपलेट है, क्या ना आऊंगा न जाऊंगा, ना खाऊंगा न पीऊंगा, आऊंगा भी नहीं, जाऊंगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं, हम ना किसी के, हमरा न कोई, हम जो मरेंगे तो रोवे ना कोई। हम किसी के नहीं, वर्ल्ड भी हमारा नहीं, हम किसी को बिलोंग नहीं और कोई हमको बिलोंग नहीं। और जब हम मरेंगे
तो कोई हमारे लिए रोना भी नहीं चाहिए। दैट इज द टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली लाइफ। और जब ये डिटैचमेंट हो गया तो एक लाइफ बदल जाता है, हालत बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। और फिर जब इनर जर्नी शुरू हो जाती है तो एक स्पिरिचुअलिटी, एक इनर लाइफ, एक अलग लाइफ होता है। और मैं जो ऑब्जर्व किया मंडली का लाइफ वैसे ही हो गया था। मेरा माई तो बाबा ने तो बोला कि सबसे पहले मैं जब रिमेम्बरेंस करता हूँ तो पहले मैं मेहरा माई के लिए प्रेयर करता हूँ, बाद में मैं मंडली के लिए प्रेयर करता हूँ, बाद में मेरे लवर्स के लिए प्रेयर करता हूँ, और बाद में एंटायर वर्ल्ड के लिए प्रेयर करता हूँ। और ये मेरा रूटीन डेली रहता है। फर्स्ट मेरा, देन मंडली, देन हिज लवर्स एंड देन एंटायर वर्ल्ड। और यही रिपीटेशन हम भी करेंगे। पहले बाबा का करेंगे, फिर मेरा माई का करेंगे, फिर उनके लवर्स का, और फिर एंटायर वर्ल्ड। वर्ल्ड एक फोर्थ इसमें आता है, फिफ्थ फेज में आता है। वर्ल्ड की उतना केयर नहीं करना, पर बाबा ने जो मंडली के लोगों को जीवन दिया है वो जीवन से हमारे अंदर चेंजेस आएगा। विद इन अस हम टोटली अलग हो जाएंगे और वही लाइफ हमको बाबा की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड में रहना है, दुनिया में रहना है, पर फोकस हमको मेहर बाबा की तरफ रखना है। वर्ल्ड के अंदर रहना है, छोड़ना कुछ नहीं, रिनाउंसमेंट भी नहीं। इनर रिनाउंसमेंट है, आउटर रिनाउंसमेंट नहीं। और जब इनर रिनाउंसमेंट करेंगे तो एक लाइफ बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा। ना ड्रेस कोड है, ना फूड कोड है, जैसे हम रहते वैसे रहना। मेडिटेशन अच्छा है, योगा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है फॉर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। योगा अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है, सोल के फिटनेस के लिए मेहर बाबा डॉक्टर ऑफ सोल है। वो सोल का क्योर करना है, सोल की केयर करना है, तो उसके लिए ओनली मेहर बाबा है। मेहर बाबा फिजिकल बॉडी को नहीं देखते, मेहर बाबा मेंटल को नहीं देखते। क्यों? तो फिजिकल मेंटल अपने हाथ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को दिया है, हमने केयर करना है। गॉड का वर्क भी करेंगे तो उसका केयर करना है। बाबा का मेरा बाद है, बाबा का मेरा ज़ाद है। इसके लिए आज हमारे बाबा लवर्स हैं यहाँ पर जो रहते हैं। 1970 से बहुत सारे लोग रहे, ओल्ड होते जा रहे। नए लोग आना चाहिए, नए लोगों ने यहाँ पर चार्ज लेना चाहिए, नए लोगों ने करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, नए लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, नए लोग आ रहे नहीं, नए लोग वर्क करना नहीं चाहते, यंग जनरेशन वर्क करना नहीं चाहती। मॉडर्न लाइफ है, अच्छा है, फिर भी हमको आना है यहाँ पर, बाबा के लिए वर्क करना है। अपना डेडिकेशन, अपना सैक्रिफाइस धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, धीरे धीरे हम लर्न होंगे। और वही है स्पिरिचुअलिटी। और ये स्पिरिचुअलिटी इज इन एक्शन है, स्पिरिचुअलिटी एक्शन के अंदर होती है। और एक लाइफ अलग हो जाता है, लाइफ बदल जाता है। जो कंट्री का लव करता है वो कंट्री लवर हो जाता है, या कंट्री लवर हो जाता है। जो मदर फादर की सेवा करता है वो मदर फादर का लवर हो जाता है। जो रिलीजन का लव करता है वो रिलीजियस हो जाता है। जो पैसे का लव करता है, वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी लवर हो जाता है। और जो गॉड का लव करता है वो सब बातों से फ्री हो जाता है। हम ना हमारे लिए कोई कंट्री है, ना कोई रिलीजन है, ना कोई वेल्थ है, ना कोई प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे सब चीज़ों से डिटैच होके अवतार को अटैच हो जाना है, अवतार का दामन पकड़ना है। और लाइफ, जिंदगी एक अलग लाइफ हो जाएगा, अलग जिंदगी। और एक लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमको 84 lakhs बर्थ एंड डेथ नहीं चाहिए, हमको उसमें से निकलना है। और इसलिए बाबा का दामन पकड़ना है और टोटल फ्रीडम करना है हमको हर चीज़ से। और एक बार जब फ्री हो जाएंगे तो एक लाइफ अलग हो जाएगा, और रियल ट्रेजर, रियल वेल्थ ये मिल जाएगा। बाबा ने 68 के अंदर, बाबा ने जब बॉडी जनवरी 30 को बाबा ने बॉडी ड्रॉप करने के पहले 29 को भाऊजी को रोज गज़ल की कपलेट देते थे। तो वो कपलेट मैं रिपीट करता हूँ। क्या बाबा ने बोले, जब तुम ही चले गए। 29 जनवरी 1969 को बाबा ने बोले, जब तुम ही चले गए तो हम जीकर क्या करेंगे। तुम ही चले गए, अब किसका मुंह तका करेंगे। जब तुम ही चले गए तो हम जीकर क्या करेंगे। 28 जनवरी को बाबा ने दूसरा कपलेट दिया था पहला, कि सब के सब खामोश थे,
और मैं उछल कर कूद पड़ा, कुछ नहीं के माध्यम से सब कुछ निकल पड़ा। 28 जून का जनवरी को 1969, 30th को बाबा ने 29 को ये दिया, 28 को वो दिया और 31st को बाबा ने बॉडी ड्रॉप किया। 30th को नाइट को 9 o'clock बाबा ने डॉक्टर कबीर को जॉन का जो सेंट जॉन था जीसस क्राइस्ट के पास, उनका फोटो लाने के लिए बतलाया। डॉक्टर गवर ने वो फोटो लाए और बाबा को सबके सामने एरज भाई थे, बाबा ने बतलाए भाऊजी मेरा जॉन है और एरज भाई मेरे पीटर हैं। और फिर 31st को भी बाबा ने मॉर्निंग को फिर वही रिपीट किया कि भाऊजी मेरा जॉन है, एरज भाई मेरा पीटर है। और बाबा ने ये भी बतलाया कि जीसस क्राइस्ट जॉन से सबसे ज़्यादा लव करता था और भाऊ मेरा जॉन है। 30th को नाइट को बाबा ने बतलाया 10 o'clock बाबा ने एक वर्ड मुंह से बोला, वो वर्ड था याद रख, इन हिंदी रिमेंबर दिस। और फिर ऑन जस्टर बाबा ने बोला आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ। 11 o'clock फिर बाबा ने वही बोला, जब एक तो वर्ड बाबा ने बोला याद रख और फिर बाद में बोला आई एम नॉट दिस बॉडी। 11 o'clock बाबा ने बोला याद रख, रिमेंबर दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी। 12 o'clock बाबा ने फिर बोला याद रख, आई एम नॉट दिस बॉडी। भाऊजी ने उसके बारे में ये एक बतलाया कि भाऊजी जब हॉस्पिटल में थे, रजनीश का फॉलोअर भाऊजी के पास आया था 96 में या 2000 में, और उसने बोला था कि रजनीश ने बाबा के साइलेंस के बारे में बोला था कि मेहर बाबा साइलेंस थे लॉन्ग टर्म के लिए और उन्होंने ट्राई किया बोलने के लिए, पर वो वोकल कॉर्ड जो था वो खराब हो गया था और बाबा का जो वॉइस था वो बाहर नहीं आया। और बाबा ने 30th को बाबा ने नाइट को वो अटर जो किया मुंह से याद रख, ये वर्ड क्लियर बाबा ने बोला। और उसके बाद बाबा ने जस्टर के ऊपर बतलाया आई एम नॉट दिस बॉडी। क्यों बतलाया? क्यों तो फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी, मेहर बाबा फिजिकल फॉर्म में थे, लिमिटेशन में थे, वो एक ही चीज का यूज करते थे, वो है नॉलेज इन्फिनिट। नॉलेज इन्फिनिट बाबा ने गॉड स्पीक दिया, इन्फिनिट इंटेलिजेंट दिया, इन गॉड्स हैंड दिया, डिस्कोर्सेस दिया, बहुत सारे नथिंग एंड एवरीथिंग दिया। बाबा ने बुक्स दिया, नॉलेज इन्फिनिट। बाबा ने पावर इन्फिनिट और ब्लिस इन्फिनिट का यूज नहीं किया, जो तो लिमिटेशन में थे, फिजिकल फॉर्म में थे। पर नेक्स्ट डे बाबा ने बॉडी ड्रॉप कर दिया और बाबा अनलिमिटेड ओशन हो गए। हम बाबा यानी पेंटिंग, बाबा यानी स्टैचू, बाबा यानी फिजिकल फॉर्म, वो लिमिटेड फॉर्म था, लिमिटेशन में था, हम वहाँ तक ही लिमिट हो गए और बाबा नेक्स्ट डे ओशन हो गए। और ओशन होने के बाद बाबा ने पावर इन्फिनिट, ब्लिस इन्फिनिट, नॉलेज इन्फिनिट, तीनों चीज़ों का यूज किया, क्यों तो फ्री हो गए बॉडी से। जो लिमिटेड बॉडी थी वो बॉडी से परमात्मा जब फ्री हो गया, वो कॉन्शियस हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए, वो हर पार्टिकल्स में, वो हर जर्रे में, वो हर कण के अंदर आ गया और उसका मैनिफेस्टेशन वही मोमेंट से शुरू हो गया। और वो है इनर मैनिफेस्टेशन, जो ओशन हो गया, परमात्मा गॉड ओशन हो गया, अनलिमिटेड हो गया, उसको बॉडी का लिमिटेशन खत्म हो गया। इसलिए बाबा ने बोले याद रख, आई एम नॉट दिस बॉडी। और हम वो बॉडी को पकड़ के बैठे कि ये बॉडी यानी मेहर बाबा, ही इज एवरीवेयर, ही इज इन एवरीथिंग, वो हर जर्रे में, हर कण कण में। बाय हार्ट हम जब उसको कॉल करेंगे तो हमारे साथी है, ये हमको ध्यान में रखना है, पर हम वो भूल जाते हैं। एक शायर ने बोला है कि उस रूखे पुरनूर का जब जलवा नजर आया, न काबा नजर आया, न कलीसा नजर आया, तो वो परमात्मा का नूर दिखने लगा, उसका लाइट दिखने लगा, तो फिर हमको काबा की भी जरूरत नहीं
और कलीसा यानी जेरूसलेम की भी जरूरत नहीं, चर्च की भी जरूरत नहीं, सब भूल जाते। जब गॉड याद आता है तो दुनिया भूल जाते, हालत बदल जाते। और वही है मेरा बात मेरा जात, कब तक है? जब तक हमको नूर दिखता नहीं, उससे यूनाइटेड होते नहीं, फिर हमको मेरा बात भी भूलना पड़ेगा, मेरा जात भी भूलना पड़ेगा कि वो तो उस रुखे पुरनूर का जब जलवा नजर आया, न काबा नजर आया, न कलीसा नजर आया। एरज भाई वंस ए ईयर मेरा बात जाते थे, आदि की रानी जाते थे, वंस ए ईयर जाते थे मेरा बात दर्शन के लिए समाधि के ऊपर। वो बार बार नहीं जाते थे, क्यों? तो उनके अंदर वो फीलिंग आ गई थी कि गॉड मेरे पास है, गॉड मेरे अंदर है। दिल के भीतर आरसी मुख देखा न जाए, और मुख तो तभी देखियो जब मन की दुविधा जाए। तो आरसी कहाँ है? मिरर क्या है? अंदर है। और हमको दिल में है तस्वीर यार की, जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो हमारा यार, हमारा परमात्मा हमारे अंदर है, हर जगह मौजूद है वो। हमको उसको इनर जर्नी के अंदर देखना है। हम आते, मेरा बाद आना इंपॉर्टेंट है, मेरा ज्यादा आना इंपॉर्टेंट है। कब तक? जब तक हम उससे यूनाइटेड नहीं होते तब तक। आप लोग देखेंगे मस्त लोग हैं, गॉड इंटॉक्सिकेटेड है, वो कहाँ आते? वो तो एक जगह बैठते, उनको तो उसका नूर हर जगह दिखता है, वो सब कुछ भूल जाते, वो गॉड ही उनके साथ है। तो जो अपना रियल फ्रेंड है अपने साथ है, तो अपने को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। दिदाए इश्क में शीशाए पैमाना बना, और जहाँ झूम के बैठे वहीं मैखाना बना। तो जहाँ झूम के बैठेंगे हम, उसका प्रेयर करेंगे, उसकी आरती करेंगे, उसका प्रार्थना करेंगे, उसके भजन करेंगे, उसकी गजल गाएंगे, हम उसमें यूनाइटेड हो जाते। फिर हमारे को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। पर जब तक हम वीकनेस है हमारे अंदर, हमारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, तब तक हमको आना पड़ेगा, मेरा बाद आना पड़ेगा, मेरा ज्यादा आना पड़ेगा, बाबा लोग से कांटेक्ट रखना पड़ेगा, बाबा सेंटर जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। कब तक? जब तक हमारा लाइफ चेंज नहीं होता है, हमारे हालत बदल नहीं जाते। और जब हम इंटॉक्सिकेटेड हो गए गॉड के अंदर, तो फिर जीवन बदल गया, लाइफ बदल गया। तो ये हमको एक शायर बोलता है, सजदा करके कदम यानी स्टेप, पैर कदम यार पे कुर्बा होना, सजदा करके कदम यार पे कुर्बा होना, लिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना। जिसका मजहब हो यार सनम याद सनम, जिसका मजहब हो यार सनम याद सनम, वो नहीं जानते काफिर होना या मुसलमान होना, वो नहीं जानते काफिर होना या मुसलमान होना। न नमाज आती है मुझको, न वजू आता है, सजदा कर लेता हूं जब तू सामने आता है। न नमाज आती है मुझको, न वजू आता है, सजदा कर लेता हूं तू जब सामने आता है। वो बोलता है कि मेरा नमाज राज है यही, उल्फत राज है यही, तू है नजर के सामने, मेरी नमाज है यही। तो वो फिजिकली जब आता है, सगुन साकार के अंदर आता है, तो वो प्रॉफिट होता है। सगुन साकार में जब वो आता है फिजिकल फॉर्म के अंदर, तो सन होता है। फिजिकल फॉर्म के अंदर आता है तो अवतार होता है। और वो जब सह समाधि इसको बोलते, और वो जब निर्गुण निर्विकल्प हो जाता है, निर्गुण निराकार हो जाता है, तो अल्लाह बियॉन्ड बियॉन्ड हो जाता है, वो अल्लाह हो जाता है। बियॉन्ड बियॉन्ड वो हो जाता है तो वो फादर हो जाता है। बियॉन्ड बियॉन्ड वो चला जाता है तो परब्रह्म परमात्मा हो जाता है। और जब वो फॉर्म के अंदर आता है, बॉडी के अंदर, तो उसको हम प्रॉफिट बोलते, उसको सन ऑफ गॉड बोलते, उसको हम अवतार बोलते। तो फिजिकल फॉर्म में जब आता है तो उसका बेनिफिट होता है कि वो तो बियॉन्ड बियॉन्ड चला गया, तो वो वर्ल्ड के लिए गॉड अलोन एग्जिस्ट हो जाता है। वो परमात्मा एक में वो कॉन्शियस नहीं रहता है दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए काम नहीं करता है। पर फिजिकल फॉर्म में वो जब सन होकर आता है, जब प्रॉफिट होकर आता है, जब अवतार होकर आता है, तो वो गॉडहुड भी, बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट भी, उसका भी उसको कॉन्शियस रहता है। और फिजिकल वर्ल्ड, इल्यूजरी वर्ल्ड का भी कॉन्शियसनेस रहता है, इसलिए वो काम करता है। हम उसको गणेश बोलते, हम उसको एडम बोलते, उसको ही हम शंकर बोलते, सती पार्वती बोलते। तो लास्ट स्टोरी मैं बतलाने वाला था, पर अभी काफी टाइम हो गया गणेश का। तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा। Thank you so much, Mehernath ji. बहुत बहुत शुक्रिया. Yes, if one or two questions are there from anyone, then we will invite. Please raise your hand digitally, or raise your hand and unmute yourself to ask. Yes, Neelam. 1 second, Neelam. Yes, please unmute, Neelam. जय बाबा मेहरनाथ जी। जय मेहर जैसे बाबा। कि
जय बाबा। आपने जैसा कि अभी बताया कि नई जनरेशन अभी वहां पर नहीं आ रही है बाबा का वर्क करने के लिए, तो मैं थोड़ा आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जैसे मैं आके वहां पर मेहराजाद में बाबा की हेल्प करना चाहती हूँ परमानेंटली, तो उसके लिए आप कुछ सजेशन दीजिए। अच्छा, आप लेटर चेयरमैन को लिखना और आपका जी डेडिकेशन, आपका जो डिवोशन है, आपका लाइफ है, वो बाबा के जी इसमें आप स्पेंड करना चाहती है मेहराबाद में स्लेव जी बनकर। बंदा हूँ, जी गुलाम हूँ, दरबान हूँ खुदा का। बंदा हूँ, गुलाम हूँ, दरबान हूँ खुदा का। ये तन भी खुदा का, ये दिलोजा भी खुदा का। ये बनकर वहाँ पर आना है। मास्टर इन सर्विट्यूड स्लेवरी है, और जब हम रियल स्लेव बनते हैं तो सब चीज़ों से फ्री हो जाते। तो रियल स्लेव बनने के लिए मेहराबाद आना है, और वो हमारे ट्रस्ट के जो डिसिप्लिन लगाए हैं, जो मंडली के टाइम से चालू है, वो डिसिप्लिन हमको फॉलो करके बाबा वर्क करना है। तो आप चेयरमैन को जरूर लेटर लिखना, आपका डेडिकेशन, आप जो वर्क करेंगे, जो भी ट्रस्ट देगा वो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो जरूर आप ये करना, ट्रस्ट को ये करना। जय थैंक यू। बाबा। क्यों, तो आज लर्न करेंगे तो आगे ट्रेनिंग है आज, तो आगे लोग वर्क कर सकते हैं। हमको ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, बाबा की प्रॉपर्टी है। जो ट्रस्ट का वर्क है, चैरिटेबल के नाम से हम जो वर्क कर रहे हैं, ये सब वर्क लर्न करेंगे धीरे धीरे। बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को दिया है, तो अपने को वर्क करना है। बाबा को प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, बाबा को किसी चीज से मतलब नहीं है। बाबा को इनर जर्नी से बाबा स्ट्रक्चर बनाते, इनर जर्नी का स्ट्रक्चर बनाते, आउटर जर्नी का स्ट्रक्चर बाबा नहीं बनाते। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को दिया है, तो अपने को फुलफिल करना है। जब तक हम कर सकते हम फुलफिल करेंगे। जय बाबा। जय बाबा। Lovely. Thank you. Thank you, थैंक Mehernath ji. यू। Mehernath ji, could we sing one of Bhauji's most fondest bhajans, Japu Tumhara Naam? या दैट इज गुड। Yeah. Okay. Jai Baba. जय This is one बाबा। of my favorites and also favorite of many people. So here is Japu Tumhara Naam, gifted by Baba through Bhauji to all of us. Jai Baba. जय बाबा। जय बाबा। जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, 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 मेहरबा। जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, 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 मेहरबा। आश भरी है तुमसे मिलने, तड़पत है मेरे प्राण। आश भरी है तुमसे मिलने, तड़पत है मेरे प्राण। दीन दया धन प्रेम के सागर बसो मेरे ही आन। दीन दया धन प्रेम के सागर बसो मेरे लिए आन, बसो मेरे लिए आन। मेहरबा, 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 मेहरबा। जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, 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 मेहरबा। मन चंचल है शत्रु हमारा नित करता अभिमान। मन चंचल है शत्रु हमारा नित करता अभिमान। तुम्हारे मिलन में पर्दा बनकर रहता है नादान।
तुमरे मिलन में पर्दा बनकर रहता है नादान, रहता है नादान। मेहरबान 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 मेहरबान। जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम। मेहरबा 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 मेहरबा। क्या चाहूं मैं तुमसे प्रियवर भाऊ एक अजान, क्या चाहूं मैं तुमसे प्रियवर भाऊ एक अजान। पाऊं सुख तुम्हारी मर्जी में चाहूं यही वरदान, पाऊं सुख तुम्हारी मर्जी में चाहूं यही वरदान, चाहूं यही वरदान। मेहरबान 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 मेहरबान। जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम। मेहरबा 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 मेहरबा। अवतार मेहर बाबा की जय। Just at last, I will repeat some Huma's ghazal, couplets, two couplets, and then फना के बगैर बका नहीं मिलता, फना के बगैर बका नहीं मिलता, खुद ही मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। फना के बगैर बका नहीं मिलता, खुद ही मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। जो है तरीका मांगने का, उस तरीके से मांगे तो बंदे को क्या नहीं मिलता। जो तरीका है मांगने का, उस तरीके से अगर मांगे तो बंदे को क्या नहीं मिलता। आज है मातम का घर, कल जिस जगह शादी हुई, आज है मातम का घर, कल जिस जगह शादी हुई, क्या कहूँ मेरे यार कैसी मेरी बर्बादी हुई। आज है मातम का घर, कल जिस जगह शादी हुई, क्या कहूँ मेरे यार कैसी मेरी बर्बादी हुई। कोई कहे हक है, कोई कहे हक है कि बुद्ध कदे में, इन टेम्पल स्टैचू गॉड इज देयर। कोई कहे हक है कि बुद्ध कदे में, कोई कहे रब की जाह है मस्जिद। कोई कहे हक है बुद्ध कदे में, कोई कहे रब की जाह है मस्जिद। हुमा बाहर क्या ढूंढता है, समझ ले खुदा है दिल में। हुमा बाहर क्या ढूंढता है, समझ ले खुदा है दिल में। These are the Baba's couplets, in the name of Huma. Baba said, काफिर उसे ही कहो जिसे नहीं खौफे खुदा, काफिर उसे ही कहो जिसे नहीं है खौफे खुदा। ऐसे बेहद काफिर को जीने से मरना भला। काफिर हुई इस काफिर, काफिर उससे ही कहो जिसे नहीं खौफे खुदा, डर नहीं खुदा का। ऐसे बेहद काफिर को जीने से मरना भला, ऐसे बेहद काफिर को जीने से मरना भला। दैट इज द मेन थिंग। बाबा सेड, यहाँ सर है लेकिन शमशीर नहीं, साउड इज नॉट देयर, हेड इज देयर। यहाँ तीर है लेकिन कमान नहीं, एरो इज देयर बट बो इज नॉट देयर। बंदे आशिक को हर हालत में बेफिक्री है, दलगीर नहीं। और जो वाकिफ इस दरबार से, यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। And that is the Huma's couplets, and according to that, we have to lead our life, we have to follow that. In all the essence are there in that Huma's way, each word. If you said the new life's tarana, that is also the most important tarana, and according to that we can try step by step to lead our life according to the tarana, according to the new life, because Baba gave that new life to the entire world, and
Step by step, we should enter in that, and one day we'll become one, we'll merge into the God, or God will merge into us, or we will merge into the God. फना इश्क का नाम है, फना इश्क का नाम है, फना में जिंदगी न देख, उसकी खुशी खुशी समझ, अपनी खुशी खुशी न देख, जलवाए आफताब बन, जलवाए आफताब बन, आवर सेल्फ वी शुड बिकम द सन, जर्रे में रोशनी न देख, उसकी खुशी खुशी समझ, अपनी खुशी खुशी न देख. फना इश्क क्या है, कारवा दर कारवा होना. फना इश्क क्या है, कारवा दर कारवा होना, यहाँ तक कि मुंतसिर होना, बेनामो निशा होना. फना इश्क क्या है, कारवा दर कारवा होना, यहाँ तक कि मुंतसिर होना, बेनामो निशा होना. कभी दरियाए बेताबी का, दरिया होल ओशन वी हैव टू सर्व, दरियाए बेताबी का सीने में सिमटाना. होल वी शुड मेक आवर कैपेसिटी टू सक ड्रिंक द होल ओशन. और कभी आश्क के कतरे का, ईच टीयर, आश्क के हर कतरे का बहरे बेकरा होना. Again, we can make the capacity to each drop of the tears, that capacity to make the ocean. First, we can suck the whole ocean and within us, and then each tears we can make the ocean. हर अश्क के कतरे का बहरे बेकरा होना, that is the फना इश्क. फना इश्क, we have to destroy, we have to become fana with that. And last I will tell the Meherabad, that what's the name of that sixth Baba Giluri Shah's last identification, and that should be our identification. मैं हूँ कौन हूँ क्या हूँ, मैं हूँ कौन हूँ क्या हूँ, मैं बेनाम हूँ, मैं बेवतन हूँ, मैं बेनिशा हूँ. मैं हूँ कौन हूँ क्या हूँ, मैं बेनाम हूँ, मैं बेवतन हूँ, मैं बेनिशा हूँ. एंड व्हाट आई एम, मैं अपने मुर्शिद का गुलाम हूँ, मैं अपने मुर्शिद का गुलाम हूँ. एंड दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बाबा गिलोरी शाह, एंड दैट आइडेंटिफिकेशन वी शुड अडॉप्ट, एंड वी शुड just all the level, one by one we have to take that level up, and we become labelless, no label, no name, no fame, no publicity, no advertise, and that is the fana ishq. And then only we'll able to merge into the God, and we'll become the God one day. Jai Baba Avtar Meher Baba ki jai. Thank you so much, Mehernath ji. Mehernath ji, I think I quickly had a glimpse that Neha had put her hand. Neha, are you there? Yeah. जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा. जय बाबा नेहा जी. मेहरनाथ जी, आज तो अद्भुत, मतलब आपने बिल्कुल ऐसा लगा जैसे भाऊजी बोल रहे हैं. जय बाबा, जय बाबा. आपकी वाणी में भाऊजी बैठे हुए थे आज, और बहुत अद्भुत सेशन हो गया. बड़े दिनों बाद एक तो आवाज सुनी आपकी, और मेहराबाद की बात हो गई, बाबा की बात हो गई, भाऊजी की बात हो गई, आपके बचपन की बात हो गई, बहुत सारी जो हमने कम सुनी थी. भाऊजी पे कोई जीवनी आई है, कोई पुस्तक आई है? भाऊजी की क्या? भाऊजी का है ना, जो अवेकनिंग है ना, सेकंड पार्ट, वो हम में करेंगे. दूसरा एक है मेहराबाद. लेट अस गो टू मेहराबाद. अलग है मेहराबाद. चलो मेहराबाद. हाँ, दो नहीं, मेहराबाद ओनली. भाऊजी ने 2 नोटबुक किया है, और मेहर गीत सुधा, प्रेम गीत सुधा, ये भाऊजी पे कोई जीवनी आई है? जीवनी तो भाऊजी की नहीं आई है. भाऊजी की जीवनी लिखना चाहिए. ये समय है, इतनी सारी भाऊजी की बातें हैं, और इस पे काम हो जाना चाहिए. एक अच्छी जीवनी इंग्लिश, हिंदी में और दूसरी भाषाओं में आ जानी चाहिए भाऊजी की. बहुत काम है भाऊजी ने, बहुत काम. बाबा के जाने के बाद भी इतना एक लंबी यात्रा, इतनी कठिन यात्रा. कोई योगी भी जो है तेज नदी में एक पांव पे खड़ा हो, उससे भी अधिक कठिन और मुश्किल यात्रा उन्होंने जी है बाबा के साथ में, और बाबा के जाने के बाद भी सारा संभाला है इतने वर्षों तक. तो ये सारा कहीं ना कहीं आना चाहिए, किसी पुस्तक में हो या फिर ऑनलाइन कहीं रेगुलर इसके बारे में आता रहे, इंफॉर्मेशन आती रहे एवरीडे ना, मैसेज जैसा कुछ आता रहे फेसबुक या किसी पे, तो बहुत अच्छा रहेगा. हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो और भाऊजी के बारे में जानना चाहते हैं.
तो बहुत बहुत सुंदर रहा, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत बहुत सुंदर रहा, भाजी का बहुत अच्छा कपलेट लगा है ना कि मर मर जी। के मेहर आप पर जीना कमाल है, मर मर के मेहर आप पर जीना कमाल है, कौन काम की वो जिंदगी जो अपना ख्याल है, कौन हाँ। काम की वो जिंदगी जो अपना ख्याल है। ये आग का मैंने दरिया है और देखो, डूब के जाना है। हाँ, आंखें जब तलक बंद है सागर भी बूंद है, आंखें जब तलक बंद है सागर भी बूंद है, खुलते ही आंख मिल सके सागर वाब में, मेहर भरा क्या राज है तेरी शराब में, जिससे मुझे है मिल रही है राहत आवाज क्या बात, अंदाज में, मैं तो करता ही नहीं पर्दा कभी पिया, पर तुम क्यों मुझको देखकर रहते नकाब में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! आज तो आप बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भाऊजी हैं आपके साथ में बैठे हुए। ट्रू 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 नेहा। बहुत और खूबसूरत, बहुत वो पूरा खूबसूरत आज जय बैकड्रॉप। सेशन, बाबा रोशनी, न्याजी, बहुत जय बाबा, खूबसूरत सेशन हुआ जय बाबा। और इतना अच्छा लग रहा है बैठ के। हम लोगों ने भी एक सेशन किया था, आप आए थे रोशनी के घर पे, और फिर वहां से हम गए थे मेहराबाद, भाऊजी का प्रोग्राम हुआ था वहां पर, वो अटेंड किया था और पूरा प्रोग्राम वहां पे मेहराबाद में भी हुआ था। सो वही हाँ सारी मेमोरीज भी साथ में आ गई, और बहुत जी, खूबसूरत रोशनी के घर प्रोग्राम एक हुआ था। सो दिस वाज वंडरफुल, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो जय मच, बाबा। थैंक यू बाबा, रोशनी थैंक जी यू। के लिए एक और बोलूंगा मैं कि अपने दिल को जला के, अपने दिल को जला के रोशनी कर ली, अपने दिल को जला के रोशनी कर ली, इसलिए मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली। जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा। जय बाबा, जय जय। आपका एक्चुअली रूम भी बैकड्रॉप में पूरे टाइम सोच रही थी कि भाऊजी जब चैट रूम में बैठते थे तो आपकी बैकड्रॉप आज पूरी वैसी ही लग रही है जैसे भाऊजी इंटरनेट चैट पे संडेज को बैठते थे। अच्छा, जय बाबा, जय बाबा, Baba. थैंक्स। So, Mehernath ji, just stay with us. We will end the session with the Meher Dhun and the Australian Aarti. ओके, So, everyone, please be with us as we complete the session. Thank you so much, Mehernath ji, for being there and day in and day out through various things जो आप करते हैं to help us all youngsters, young and old, to love Baba more and more. And thankful to you, Raji, and everybody in your family for doing all that you do in Baba's love and cause and helping us all. Thank you. जय मेहर Thank बाबा you. की। Jai Meher Baba. We move to the Meher Dhun and Australian Aarti. ओके, जय बाबा, जय बाबा। मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा।
Baba, Meher 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 Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। O glorious, eternal, ancient one, your face is a bright, transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart, meher, I give to you to speak. Creator, yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar. Through compassion, the three worlds maintain. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling strokes of breath of the world's wheel that bears me unto death. Unless you are infinitely kind, break the wheel of which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining hour. You are myself, I sing to you in grace, and beg your love to bear me through the day. Till you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय। We'll have 1 minute of silence.
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Can we all unmute and say Avatar Meher Baba Ki Jai 3 times? Everyone, please unmute. Then we'll start together. Okay. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Thank you so much. Thank you. Jai Baba, Jai Thank Baba. you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much for being there. Jai Meher Baba. Jai Baba Mehernath. Jai Baba, Norman, Jai Baba, Jai Baba, Jai Baba. Those who wish to stick around to chat a little bit, please feel free. The official session is over. Jai Baba. Jai Baba, Jai